Hello, Gaurav, can you hear me? यस मैम, लाउड हेलो। एंड क्लियर। अच्छा ठीक, थैंक यू सो मच। बाकी ओके। मैम मैंने आपको लिंक शेयर कर दिए हैं। अच्छा ठीक है। इफ एनीवन रिक्वायर्ड यू कैन शेयर ऑल्सो। ऑफ बाकी लिंक आप ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब मैम ऑलरेडी लाइव है। अच्छा ठीक। हाँ। ठीक ठीक ठीक। बाकी मैं भी कनेक्टेड ही हूँ, ऐसा कुछ लगेगा तो मैं भी देख लूंगा।
हाँ गौरव, कैन यू हियर मी नाउ? गौरव। यस मैम, यस मैम। ओके। ओके, हाँ सो मैम, यहाँ नाउ आई पॉज है। थिंक अब नहीं आ रही है वहां से नहीं 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 रिकॉर्डिंग नहीं, के। नो मैम, नो मैम। नो, अभी अभी वो, देखो आ रही है। आ रही आ रही आ रही। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैं लाइव करता हूँ दोबारा ऑन। देखिए हाँ वो मैम, यूट्यूब यूट्यूब लाइव है मैम। मैम यूट्यूब मैम लाइव है मैम, अभी भी यूट्यूब पॉज नहीं हुआ है। यूट्यूब लाइव है अभी भी। आप मैम एक काम करिए, जो यूट्यूब है आपका। हेलो, वन सेकेंड। गौरव। यस गौरव। मैम। अच्छा गौरव, ये मतलब जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि जैसे मैं इधर लाइव करती हूँ तो फिर वो वापस प्लेबैक करना शुरू कर देता है, तो क्या करूं मैं, वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैम एक काम करिएगा, आप जो यूट्यूब है ना, इसको हाँ। मतलब अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। वहीं पे हाँ। स्टार्ट करिएगा जब जब सब लोग कनेक्ट हो जाएं।
नहीं वो तो ठीक है, मान लिया उसको कनेक्ट भी हो जाएंगे तो स्टार्ट करूंगे तो फिर भी तो वही हालत होएगी कि पलट के नहीं तो आप अपनी बोलने तरफ से। मैम प्ले, नहीं नहीं, आप अपनी तरफ प्ले मत करिए ना उस समय, उस स्क्रीन पे जिस पे आप ऑटोमेटिक वहाँ उस पे मीटिंग कर रही हैं। नहीं तो प्ले तो मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप ही प्ले हो रहा है। जैसे मैं लाइव कर रही हूँ वो अपने आप ही प्ले हुआ जा रहा है। तो उसका मैम जो पेज होगा ना, जो उसका आपका अपने उसका यूट्यूब का पेज खुला होगा, उसको वो हाँ। मिनिमाइज कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए मैम। अच्छा वो देखिए सिस्टम। अभी नहीं आ, अच्छा देखिए अभी अभी नहीं आ रहा है ना। एक लेट सेकेंड। मी से देखिए, अभी हम लोग बात करें तो नहीं आ रहा है। एक मिनट मैम। हाँ देखिए देखिए, अच्छी बात है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, आप बस ये देखिए आपके पास लाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके पास लाइव आ रहा है गौरव? मैम एक मिनट रुकिए, मैंने प्ले किया हुआ है, जस्ट एक मिनट। हाँ हेलो। डॉक्टर साहब। हाँ हाँ गौरव। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर। सर का फोन आया था, विक्रम सिंह सर का, तो वो कह रहे थे आप तैयार हैं, सब सेट है। तो मैंने कहा हाँ, बस वो थोड़ा सा चेक कर रहे हैं हम, वो लाइव किया हमने यूट्यूब, इसको लाइव स्ट्रीमिंग अच्छा। की है। तो वही सर कह रहे ठीक है, मैं ठीक 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। हम्म। अच्छा गौरव देखिए अभी है जी लाइव जी की नहीं? क्या मैम, वो चीज? लाइव है अभी, लाइव है। अच्छा लाइव है तो ठीक है, मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम स्टॉप कर दिया है। हाँ, आप उसको यूट्यूब पर रह दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। ठीक। यदि आपको ये आवाज इको हो रही है ना मैम, तो उसको थोड़े के हम्म। लिए बंद कर दीजिएगा, नहीं बाकी इको नहीं हो रही है, अभी अभी इको नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही। ठीक है मैम, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Dr. Shikhaji. How are you? आई एम सो So गुड सर। wonderful. The morning, you're sitting there in the night, but here you brighten up the morning, sir. God bless you. God bless you. I'm so delighted to be a part of this wonderful family and so much to learn from each and every one of you. And I'm so happy that your special guests this time are people who are so iconic. Uh, Mr. Avani हाँ Mohan Singh ji and जी सर। Miss Kea Waswani ji. And you have got the right people to inspire one and all. The guardian of this event is you, and you have been there since 2008, sir. So everybody has to be a diamond quality only when you are there around. And God bless you, अभी Shikha ji. and Dr. Pradeep Srivastava is also, वो आपको पूछ भी रहे थे, डॉक्टर प्रदीप Mhm. आर यू देयर? वो आपको पूछे सर हाँ, कैसा, यस। हाउ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर विक्रम सिंह सर। Good morning, Dr. Pradeep ji. So wonderful to catch up and listen to सर your क्या wonderful. टाइम है वहाँ पे लॉस एंजलिस में, क्या टाइम है? यहाँ पर टाइम हो रहा है सर, 9:30, 9:30 बजे रात। अच्छा अच्छा। जी। मोस्ट वेलकम सर। अरे थैंक यू वेरी मच। ये तो हमारे लिए तीर्थ यात्रा के समान है सर। और हमारे लिए टाइम मैटर नहीं करता है जी। और सब चीजें मैटर करती हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमेशा की तरह बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ आप इसको संपन्न करा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। एंड सर हाउ इज इट फीलिंग देयर, कैसा लग रहा है वहां पे, अ, जहाँ देखिए पे आप डॉक्टर हैं इस शिखा, वक्त? मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपने कमरे से बाहर सोच समझ के निकलता हूँ। आई डोंट, मुझे आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, जी नहीं। मैं जो हमेशा रहा रहता कमरे में रहूंगा, स्वाध्याय करूंगा। जो इवेंट्स हमें करने हैं वहां बस ले जाइएगा, और खाने में खिचड़ी के अलावा पूछ के दीजिएगा। बाकी ये जो बाकी सब चीजें हैं 56 भोग, वो मैं खाता नहीं। बिल्कुल सर, मैं आप आपको अच्छे से हम लोग सब जानते जी हैं। जी जी। और अब हमें मालूम है कि यू सो कॉशियस, स्पेशली जब आप वहां जा रहे हैं, और आपको तो पता ही है सर कि बाहर उनका वेजिटेरियन जो होता है, जो बहुत ही प्योर वेजिटेरियन है, वो हमारा महाअघोर नॉन वेजिटेरियन महाअघोर बनते, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं तो 3-4 दिन का प्रसाद लेके आया हूँ, और इसी में एकादशी भी कल है और 27 को शायद पूर्णमासी भी है। तो जी दो सर। व्रत भी पड़ रहे हैं इसी दौरान। तो वो ठीक है। जो एक कंसेप्ट पहले होता था स्वपाकी, तो फल रख लिया खूब फ्रिज में, खूब फल दही और दूध रख लिया है, तो बाकी सब लोग को जिसको जो कुछ खाना है अपना आनंद ले। हम तो इसी पे हमारा काम चल जाएगा, फलाहार पे।
सर ये सब योग ही है तो आपको इतना एनर्जेटिक बना के रखता है, और कभी एनर्जी में तो कोई कमी आती नहीं मेरे ख्याल से। यही एक एनर्जी देने वाली चीज है, बाकी जो खा पी बिल्कुल सही के है। जो इधर उधर के बैठते हैं सर, तो उनकी तो वैसे ही एनर्जी डाउन हो जाती है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रही हैं, आप सही कह सर रही हैं। इस बार से जो हमारे कॉन्टेस्ट हुआ था, तो बहुत ही हम्म खूबसूरत आशमा मैम का आइडिया था सर। तो हम्म, उसमें उन्होंने कहा था कि हर कोई बच्चा 3 दिन तक नेचर के किसी एलिमेंट के साथ बातचीत करे, लगातार 3 दिन तक। और उसके बाद वो देखे कि कुछ उसको कोई लेसन मिला कि नहीं। पहले हमको समझ में नहीं आया था कि ये कितनी खास एक्सरसाइज होगी, लेकिन जब ये दी गई सर, तो इतने बढ़िया रिस्पॉन्सेज आए, हर बच्चे ने इतना अच्छा अच्छा लिखा। हमको यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बच्चे जाएंगे नेचर के पास बैठेंगे। अब तो ये बच्चों ने सीख भूल ही गए कि नेचर नाम की कोई चीज भी होती है। लेकिन सर 164 एंट्रीज पूरे भारत भर से आई, और बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन उनके रिस्पॉन्सेस थे। उन्होंने अपनी उनसे कहा गया था कि अपनी फोटो भी भेजें कि जब वो नेचर से बात कर रहे हों। तो वो फोटोग्राफ्स भी उन्होंने भेजी। तो ज्यूरी के लिए इतना मुश्किल था कि वो क्या करें और किसको दें किसको। कई बच्चे एक एक उसके नंबर के डिफरेंस में आ रहे थे, बट बहुत ही इनक्रेडिबल सर उनकी पूरी ये जो परफॉर्मेंस रही है। 11 स्कूल हैं सर जिन्होंने भाग लिया है, और अच्छा एक और 164 बच्चों ने भाग लिया है इन 11 स्कूलों से। ज्यादातर सर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बच्चे हैं इससे। जी जी, अच्छा, वेरी गुड। जबरदस्त रिस्पांस है, बिल्कुल डॉक्टर शिखा जी जी, सर। जबरदस्त जी सर। रिस्पांस है। जी हाँ जी जी। सर। ये इतने सालों में ये एक ऑटो पायलट में सर चल, पहले हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब सारे स्कूल इतने फेमिलियर है कि ऑटो पायलट मोड में ही चला जाता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। आपने तो एक ज्योति जलाई और उसको बरकरार रखा। आपको फैमिली से, स्वयं सिद्ध फैमिली से पूरा सहयोग और एक सिनर्जी मिल रही है, जिससे कि ये चीज इतनी आगे बढ़ गई, तरक्की कर ली है, और एक विशाल वटवृक्ष की तरह से आज सबको साया दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। बड़ी खुशी है मुझे। बाकी राजा जी कैसे हैं, उनके साहबजादे कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं? सर सब बिल्कुल ठीक ठाक है। उनके साहबजादे काफी एक्साइटेड हैं, क्लास 9 में पहुंचे हुए हैं। क्लास तो 9 में? अच्छा, दैट बेबी जी सर। ओ, जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और उनको कितना पता है कि वो 9 में पहुंचे कि नहीं, पर हमें बहुत पता चल रहा है। तो सर वो काफी एक्साइटेड है, और वो दोनों लोग और घर पे सभी और मम्मी वगैरह सब जुड़ेंगी सर इससे। अभी जी जी यूट्यूब जी के लिए उसका और चैनल मम्मी के लिए ऑन कर दिया ताकि बड़ा से वो देख पाए उसे। जी जी जी। हाँ शर्मिला कैसी है? नमस्कार सर, नमस्कार मैम। जी मैं नमस्कार बिल्कुल नमस्कार ठीक शर्मिल। हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि आपको सुनेंगे। मेरा अहोभाग्य, मेरा अहोभाग्य कि आप ऐसे विद्वान लोगों के बीच में, मनीषियों के बीच में आने का मौका मिला जी। सर हम लोगों सर, का वो भाग्य है ये तो। सर हम सारे जी लोग जो जो मतलब बड़ा प्रतीक्षा करते हैं बच्चों की तरह, बिल्कुल प्रतीक्षा करते हैं जैसे बच्चों की कौतूहल होता है हम सबके अंदर। आपने ऐसे चाहे हमारी उम्र कितनी हो जाए सर, पर कौतूहल आप जगाते हैं कि हम सुने आपको। और बिल्कुल बिल्कुल, वेरी अरे, ट्रू मैम जी। और सो वेरी चाहते हैं काइंड ऑफ बहुत यू। लंबे समय तक, मतलब बहुत ज्यादा समय और जल्दी जल्दी सुने। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, पर जब मौका मिलता है तब कोशिश करते हैं कि जरूर सुने जी। दैट इज सो वेरी काइंड ऑफ यू, सो वेरी ग्रेशियस ऑफ यू। आपने मेरा मोराल और मनोबल दोनों बहुत ऊंचा कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। सर हमारे साथ अब चूंकि आज संडे का दिन है, तो लोग धीरे धीरे करके ज्वाइन करेंगे। जी जी और जी। कुछ लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो सर हम समय को ध्यान में रखते हुए अ, मैं अवनी मोहन जी हमारे साथ आ चुके हैं। नमस्ते सर। अवनी मोहन जी आप अपना अनम्यूट कर लें प्लीज। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। अवनी मोहन जी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, आपको स्क्रीन पे डॉक्टर विक्रम सिंह दिखाई दे रहे हैं, देख गुड पा रहे मॉर्निंग हैं आप? सर। Good जी जी। morning, Mr. Avni Mohan ji. Such a privilege and honor to interact with you and have your darshan, even though थैंक यू सर। online. थैंक यू सर। Delighted, delighted to see you. थैंक यू सर। और हमारे स्कूल के कुछ बच्चे भी यहाँ जुड़े हुए हैं। शगुन जुड़ी है नवसृजन से।
और शायद ओपी वर्मा सर भी जुड़ रहे हैं। तो चूंकि अब हम, और मैं देख सकती हूँ अमीना सिद्दीकी अपने साथियों के साथ जुड़ी हुई हैं, सर स्कूल हमारे जुड़े हुए हैं, विनय जी जुड़ गए हैं, तो मेरे ख्याल सब समय भी हो रहा है। So good morning, ladies and gentlemen, all dear students. My salute and gratitude to each one of you for the gesture of unconditional giving, patience, and values of sacrifice, your comfort. Today is Sunday, and I know many of you have only this day to either relax or do your pending work, but you are here to join us. This gesture very much aligns with the intrinsic value of nature. When you hear nature, you listen to those decades or ages of choices, perseverance, patience, nurturance, endurance, upheavals, and quiet resilience of care. And that's the way you all have been all along. I'm so grateful to each one of you. The theme this year is also listen to nature and learn your lessons. Before I take the privilege of welcoming all of you, very, very precious to this event and precious to Swayam Siddha, let us invoke Lord Ganpati and request and submit all our investment today, the efforts, the energies, to remove those obstacles, whatever, and also bless us to make this exercise fruitful and also spiritually fulfilling. For this Ganapati Vandana, we have two kids from GMR Varalakshmi DAV Public School, Rajam, Andhra Pradesh. K. Pranita Sri and Y. Manya Sri to kindly recite Ganapati Vandana. Yes, teacher. Manya and Pranita, are you there? Yes, teacher, here we are. Yeah, so I request you. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवरिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवरिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारुकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं. Thank you so much, Pranita and Manya. ये दोनों बच्चियां क्लास 9 की हैं। बहुत बहुत खूबसूरत आपने वंदना प्रस्तुत की है। आई थिंक द एंटायर सिस्टम इज filled with the fragrance of divinity. Thank you so much, beta. You're welcome. How do you survive? I asked the earth. She told, by letting every ending feed the beginning. This I realized on the same day in 2006 when I lost my father. The grief was intense, and I was not able to understand what to do. I sought answers from the universe, and I got the answer.
The ending was challenging my survival. But then the answer was to turn it into seeking, evolving, giving, and realizing. And that's how the Environment Awareness event started in 2008. Every year, 23rd August, we observe this day by everybody unconditionally giving to create awareness among people about awareness, about environment. Nature is something which symbolizes my father's values. So that's how we decided we'll dedicate it to nature every year. 18th year this year, 18th year of this event. Many of you have been there when the event started in 2008. I can see many of you. आप सबने इस इवेंट की उंगली पकड़ के इसको चलना सिखाया. I would take a privilege to welcome all of you, to begin with Vikram Singh sir. We all know you as a living legend. You have been there in 2008, my first event, when I didn't know where would it head to, how would it go ahead, but you were there to bless. You were there throughout the event when you were DGP in Uttar Pradesh, and how occupied you were, but then you were throughout concentrating, helping, nurturing, and actually sowing the seed of a very strong journey today, 18 years. So welcome you. You are connected to us from Los Angeles, and you are here at this hour of that night, and you never even mentioned that. And I'm so grateful to you. All of us very grateful to you, sir. Thank you so much for joining. I welcome Ashma ma'am. She is a person I think many of us, consider her to be someone look upon as the most powerful inspiration, as a human, as a woman. I think her idea flows with uniqueness. Any time when this event has wider appreciation for its very creative, juices that it triggers in everybody's mind, it's just because of ma'am, Ashwa ma'am. Ma'am, you're the founder member of this event. And I really, really pray and bless your, being there every time. And you've been there every time. And this event cannot go without you. So, because we need that, meaningful touch to it. Thank you for your stroke to this, ma'am. Thanks a lot. My friend Augustine is here. I welcome you, Augustine. Augustine has been there since the time when my first event started. He knew my father, my closest friend, who's groomed me, mentored me, but has mentored this event as well. He always considers this event as a yajna, and he sees to it that he's available. Einstein is also Mindshare, one organization, very powerful organization. He's the president. And Mindshare has been contributing since last year to this event, especially for the contest certificate. Children gets beautiful certificates and trophies because of Mindshare. Mindshare does that. So welcome, Augustine. My Ritesh is there. I saw him just now, Ritesh, Dr. Ritesh Arya. Dr. Ritesh Arya is right now traveling to Leh. He was stuck yesterday in the landslide, but he is here. I just now saw he somehow is trying to connect with the Dr. Ritesh Arya is Guinness Book of World Record holder. Yeah, I can see him. Ritesh, you can just wave and everybody knows where you are. Yeah, you can see where is he. Dr. Ritesh has done very precious thing to this event this time, especially for the kids. Every school is getting a memento in the form of fossil. Nobody can buy fossil, nobody can explore fossil. It's only a Johari that, gives us. Ritesh is president of Tithis Museum, which is Fossils Museum. And he has given us a rock, which is a fossil rock. And this is how we have been, blessed to have this. So Ritesh, welcome. I also welcome Dr.
Mangesh Thakkar, who is Birbal Sahni Institute's director, a very humble, down-to-earth person who was very excited to help us to chisel these fossils to become the, mementos. Thank you so much, Dr. Mangesh Thakkar, who is here with us right now. We can see you, a very excited person to, reach out to every individual. So to make them understand, to listen to the rocks. Thank you and welcome you, sir. The entire team of BSIP, Dr. Vinita Bhartiyal, Dr. Prashant Das, Dr. Paltan, and Dr. Santosh Kumar, welcome all of you. My heartiest welcome to Dr. Avani Mohan Singh. He is known as Waterman of Central India. His 3 decades of work has done so much to make the entire dry belt greener. Welcome, Dr. Avani Mohan. He's with us. Kea, I'm sure she's going to join us shortly if she's not here. Kea is a young film director and she has won national award. The most important thing about Kea is she's I can see you, Kea. Thank you for joining. Welcome here. This young girl is an animal whisperer. She talks to stones, she talks to animals, and we have very exciting session by Kea today waiting for you, Kea. We have our jury members who have done a very incredible work of judging 164 entries from across the country through 11 schools. So Dr. Akhila Anand, who is right now, I think would be the youngest person who is right now playing chess. He belongs to Singapore and he's there, but he has sent his video, so which we will play subsequently. Dr. Raj Mehrotra, who has been curator, National Science Museum, New Delhi, a very veteran person. So welcome you, Dr. Raj. Then I can see my NABARD friends joining us. Mani Kumar, my very close friend, a family member of mine. Welcome, Mani. And I can see a few other NABARD friends and they would subsequently join my great institution. It's almost like a family. All of you are there to care for this event, to care for me. And that's how you are here on this Sunday. I can see Dr. O.P. Verma. Welcome you, sir. You have always been there. And thanks a lot for joining us. I can see the school mentors who have mentored their kids to participate in this event. I can see all of them here. A few other people would be shortly joining us. Kailash Keswani ji, you have been since 2008. Welcome you, doctor. And the way you have always been. Thank you so much. So I have got so many friends around. All of you, welcome. If I'm missing somebody's name, my heart is welcome to all of you. And we are going to see something very incredible today. Girish Chandra ji from Siemens Gomti Nagar has already joined us. Welcome you. So now this is a time when I would like to introduce you to somebody who is known to be world's sign tune man. And I'm sure you know who is he because very popular, Dr. Pradeep Kumar Srivastava. So before I hand over this entire anchoring to Dr. Pradeep, I would like to share a few things about him. Though his biodata runs 2 pages, but I'll be brief so that you can understand what exactly is his credential. He has created a new discipline in the entire world called Scientunics. And what is Scientune? Scientune is something very, very interesting thing where there is a cartoon backed by a scientific data or something related to science. It is his own creativity which can't be explained by me. It's only when you see it, then you'll understand what it is. So this is the noble cause that he does where he, disseminate information through Scientunes and which is understood by each and everybody, be it's a driver or a teacher or a scientist or anybody. Everybody understands when he says anything about science. So he is also known as father of Scientunics, which is a new branch of science communication. He has delivered more than 1,500 lecture, maybe much more than, across the globe: Nepal, Bhutan, Thailand, Singapore, Hong Kong, Turkey, China, Portugal,
France, Germany, Spain, Sweden, Australia, South Africa, Brazil, USA, Caribbean. I think there are so many other countries, 31 different topics. It was more than that. A few awards which I like to mention. There's so many he's gotten, but a few I would like to mention. Outstanding Young Person of the World, given by Junior Chamber International USA to 10 selected persons of the world. I'd like to share with you a few of those 10 persons. The past recipients have been US President John F. Kennedy, Richard Nixon, Dr. Henry Kissinger, Jackie Chan, and then one Dr. Pradeep Srivastava among them. He has been also Outstanding Young Person of India, the award given by Indian Junior Chambers. The past winners include Sunil Gavaskar, Ravi Shastri, P.T. Usha, Pankaj Udhas, Sudha Chandran, and people like these, great personalities. National Award for Science Writing by Indian Science Writers Association, New Delhi. He got silver medal for the best lecture in Asian conference held at National University of Singapore. International brand ambassadors for Singapore-based magazine, The Young Scientist. And the list is long. So let you see him, listen to him to understand what I have not told to you. So, Dr. Pradeep, I hand over this entire proceeding to you to anchor. Over to you. Thank you so much, Dr. Shikha Tripathi ji, for a very nice introduction. I think it's a great day for all of us. Tribute of a daughter to a father. The best I can explain, Swayam Siddha. And every year we gather, we share a lot of things. And we are very lucky and we are very blessed to have our first speaker, who is all the way from Los Angeles, United States of America, Dr. Vikram Singh ji. He is the 1974 IPS officer, and as a Director General of Police, he was the commanding officer of 190,000 police force in UP. You can often see him on television speaking with a tough tone, a bold officer, and lot of things, he can very boldly explain to the people in a very nice way what is the legal angle is there, what is the police angle is there. And not only that, he's an IPS officer. He did MSc in and in 1972, and after that he did PhD also. So Dr. Vikram Singh is currently the pro-chancellor of the Noida International University in Noida, and it's always a treat to listen to him. He's a speaker par excellence, and nowadays I think he's the most sought person for media. Whenever I open social media, I can see at least 1 or 2 reels every day where he's discussing something on a podcast and sharing a lot of his views about the latest what is going on in the country. So with these words, it's a great honor for me to welcome you, sir. Over to Dr. Vikram Singh. God bless you, Dr. Pradeep Kumar Srivastava ji, Dr. Shikha Tripathi ji, distinguished guests and the participants. Dr. Shikha Tripathi ji and Dr. Pradeep have been unusually kind and magnanimous to me. I would say that the beauty lies in the eyes of the beholder. And indeed, I have been associated with this movement since its inception. I compliment Dr. Shikha Tripathi ji that she converted her personal grief into social service. And this social service, whoever has been truly blessed, is like going for a Ganga Snan, that when you go in, you go with a load, but when you emerge after the Ganga Snan, you come out much lighter, more positive, full of enthusiasm and energy. And this event, I'm told, as introduced by Dr. Shikha Tripathi ji, has been an event with a great difference. Immense gratitude to Madam Ashima Singh ji, who has been a source of inspiration to Swayam Siddha and to one and all. And the theme this time was listen to nature. Listen to nature. That the children were exhorted to be with nature, in the lap of nature, because today's, as you can see, with a great sense of concern and also disconcert and disquiet, that the children, apart from sitting in the lap of nature, they would be sitting on the lap of the social media, and the rest is history. I would say that these 72 hours of being with nature
would be a game changer and would change their personality and take them to a spiritual, moral, and an academic high. And I'm sure, as the learned speakers before me have said, as Lord Tennyson also mentioned, that you have to get that receptivity. I see books in the running books, sermons in the stones, and the tongues in trees. And they say that nature talks you back. But for that, as philosophers say, कि चेतना इतनी समग्र हो जाती है कि आप प्रकृति से वार्ता करने लगते हैं और प्रकृति भी आपसे वार्ता करने लगती है। लेकिन उसके लिए वो संवेदनशीलता की आवश्यकता है जो कि आप सब में है, मेरे अंदर तो नहीं थी। लोग कहते हैं कि साहब आपने देखा होगा कि जिनकी प्रकृति समग्र होती है उनके कंधे पे चिड़िया आके बैठ जाती है, उनके कंधे पे बैठती होगी। जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मेरे पास तो मेरे बच्चे भी आके नहीं बैठते हैं। वो अपने अपने जैसे भाव होते हैं, अपनी अपनी जैसी प्रकृति होती है, क्योंकि जैसा हम नेचर को, प्रकृति को देंगे, उसका सवाया करके प्रकृति हमें भी लौटाएगी। हमारी जो हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज हैं, आर प्रोपेंसिटी टू मेक द मोस्ट till the sun shines, and also to exhaust and milk nature till it reaches a level of exhaustion and termination. You're all ecologists by profession. By practice, you would understand that the property of any ecosystem is to balance itself. And the property of homeostasis is not, eternal. It has to be balanced. If the impurities and the pollutants are added beyond measure, the nature and the capacity if the ecosystem will break down. We have learned people in the August gathering today. Of course, we have Madam Ashima Singh ji, Dr. Ritesh Arya ji of TIFI's Fossil Research Museum, Professor Mahesh ji Thakkar of the Birbal Sahani Institute of Paleobotany, Mr. Augustine, my good friend, and Dr. Shikha ji introduced Madam Kia Vaswani, a film director and producer who has won many accolades and awards. Mr. Avani Mohan Singh ji, waterman of Central India. And I have only a one-liner to suggest that the theme this year has been to live with nature. And indeed, each one of you in the Swayam Siddha family is unique, blessed with so much of positivity. I, for one, have been with so many Ganesh Vandanas, but the Ganesh Vandana today, those who are discerning would understand, was a Ganesh Vandana with a difference. My pranams to the parents of dear Pranita and dear Manya. The accent, the pronunciation, and the delivery of the Ganesh Vandana was so unique that I'm sure I got goosebumps, and all of us who were privileged to hear this Vandana would have got goosebumps. God bless you, Pranita beta and Manya beta. Living with nature, 11 schools participated, 164 entries. I can well understand the compulsions of the jury, but yes, this is one aspect of training oneself. Allow nature to heal. Nature is the best healer. Today we have so many therapies. We have so many ways of curing oneself, but the long-lasting cure, not only for all human ills, but for all ailments, would be to press the reset button of nature. And this is exactly what Swayam Siddha is doing. This is exactly what Dr. Shikha Tripathi ji is doing. Where you have a fantastic interaction, I'm always at your disposal. 18 years since its inception. Today, now, Swayam Siddha and this wonderful movement is almost on the verge of becoming an adult. 18 years from zero, and I think into adulthood. Now is the time to get up, walk, jog, and run, and give an unmistakable message, unambiguous message to humanity that it is either survival or perish. I remember what one of the esteemed members said almost 15 years ago, and his message said, whatever we are doing today is like applying Band-Aid to terminal cancer. Too little coming too late, but I'm sure Dr. Pradeep, Dr. Shikhaji, distinguished members, you will do immensely more so that the Bhagirathi Prayas that was initiated 18 years ago, with the blessings, the divine blessings of Dr. Shikhaji's late father, I'm sure you will get success. And indeed,
May God always bless your path. I'm sure of that because the energy and the enthusiasm that Swayam Siddha has and imparts to every participant is indeed amazing and divine. All the very best. My humble pranams to Dr. Shikhaji's father, to Dr. Pradeep K. Srivastava, Dr. Shikhaji, and each and every participant, especially my dear students. You are truly blessed to be a part of this wonderful family as I am. With all my greetings and good wishes, God bless you all. May God always bless your path. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your blessings. I think it is a treat always to listen to you. You always motivate and just encourage, the younger generation. The very key, you remember the name of those two girls who sang Ganesh Vandana. I think it's amazing. Even I forgot the name. So thank you so much, sir, spending time all the way from Los Angeles to Lucknow. It's a great honor for us to be with you, sir, to get your blessings, to listen to you. Thank you so much. Thank you very much, sir. Very kind of you. My good wishes, greetings, and pranams to each and every one of you. God bless you always. Stay blessed. Thank you. Now, the next person is Dr. Ritesh Arya, the waterman of Himalayas. And Ritesh Arya is known for the finding water at multiple locations in the high altitude, cold and mountain desert of Ladakh, including the Siachen Glacier, which has made him a Guinness World Record holder in 2014. He was director of water and geothermal section at the International Sustainable Energy Organization, ISEO. Before Dr. Arya and after Dr. Arya. That is how Ladakh water history is told. He left the government job on daily wages to prove that granite mountains 18,000 feet high, written off as a geologically barren, would still give life. Dr. Arya, president of the Tethys Fossil Museum and Research Center at Kasauli, was born in Shimla. From the ice hockey ring to the golf greens in Ladakh, from the Mahabodhi Institute of Meditation to the army bases in the border regions, from thousands of households to agriculture initiative, everything bears the welcome watermark of Brand Arya. So I think it's a great honor for us to have him today. I have heard him before. He is really a miracle man, and he has brought water to the Siachen Glacier army people. That was the biggest achievement I can say. So over to Dr. Ritesh Arya, or maybe if there is a film, Dr. Shikha Tripathi may show. Yes, we could see him. Yeah, so Ritesh, I think you speak because I wanted to show your your video, but I thought that you speak first. You never know. So shall I show that small video, or would you speak first, As Ritesh? you wish. As you wish. No problem. So your signal would be intact now for some more time till I show this? Yeah. We are lucky now. Yeah. We are. Yes, I would love to show that before I would request Ritesh to speak. Just a second, let me get that. I hope you can see that. Everybody can see this? Hello? Yes, please. Yeah, so I just wanted to share everybody that this time something very precious has been contributed by Dr. Ritesh, the president of Tethys Fossil Museum, for every school. And this is something you'll cherish forever, each school. So what he has done is that he has sent a fossil rock from his museum, which is in Himachal Pradesh, a great museum. There's a website you must all visit, and if you happen to be in Kasoni, you must visit. Majority of these fossils are his personal collection, and then he has sent that rock, which is a oyster fossil. He'll tell about that fossil. And this fossil has, I was just wondering as to how we wanted it to be given as memento to each school. But I did not know how to cut it because it can't be cut by anybody, any other person like marble or any marble cutters that also can't cut it. So then what I understood is that why should not I contact the Institute of Paleobotany, where we did first event in 2008. And then all the
people there have been extremely supportive. So I requested my friend in BSIP, Dr. Meeta Fartiyal, and we went and met director, and he was more than happy to help this particular thing so that it reaches all school and school kids start learning about fossils and the rock. So thank you, Ritesh, and thank you, Dr. Thakkar, the director, my friend Vinita and her team, Dr. Santosh, Dr. Paltan, and Dr. Prashant Das. I would show kids that when you see this fossil, when you'll get it in your school, how does it come? So I'm showing a small clip of Ritesh, if you can all see her. How you discover and identify. It's not an easy work, hard work. Here Ritesh is trying to, take out the fossil out of a rock, which was lying on the road. So you can see this victorious smile of Dr. Arya. You probably might not have heard because the volume was too soft. But I was wanting to show you how a fossil is, taken out from the rock. And was just lying on we probably would have missed it, but Dr. Arya got in it. And now it goes to Birbal Sahni Institute, and where they're cutting it, polishing it, drying it, and then it converts into fossil, which I'll show you also. That's how they're cutting it. So this is what I will show. Every school kids, all 11 schools will get this as memento. So, so congratulations to each one of you. Now, Ritesh, over to you. Thank you, Dr. Shikha. This was nice. You can see the background. We are in Ladakh now, and I have been in Swayam Siddha for the second time, and now we were stuck up in somewhere near between Padam and Leh, but luckily Swayam Siddha का इवेंट होना था और हमारे को यहाँ पे टाइम से पहुंचना था. नाउ ऑलमोस्ट नियर सिद्धम, और यहाँ पे सिग्नल पहली बार आए हैं यहाँ से पूरे रास्ते में, और वी आर लकी दैट वी वर एबल टू पार्टिसिपेट. देखिए, आपका जो थीम है वो है लर्न लिसन टू द नेचर. अब नेचर क्या है? वो हम रोज बोलते हैं भगवान, और हमारे को इन 5 तत्वों के बारे में बताया जाता है. वही नेचर है बेसिकली. भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील. और ये 5 तत्वों के साथ अगर हम इनकी बात सुन के रोज इनके साथ बात करेंगे तो हमारा बिल्कुल इनके साथ सुनते भी रहेंगे और इनके साथ अच्छी तरह से जी भी सकते हैं. कोई इसमें दो राय नहीं है. तो हमने क्या किया, आपके साथ जो ये फॉसिल्स शेयर किए हैं, अभी भी हमारे को यहाँ पे रास्ते में आके काफी, इस बार तो हमारा ये ऑलमोस्ट हमारा 15वां दिन है या 16वां दिन है. यहाँ पे हम टेथिस फॉसिल म्यूजियम कसौली से चले थे और यहाँ पे लद्दाख में इस टाइम है, और काफी फॉसिल्स हमने ढूंढे हैं, काफी रॉक्स ढूंढे हैं, और बहुत ही मस्त हमारा ये टूर रहा है. तो फॉसिल्स बच्चों के लिए मैं बताया तो कैसे बनते हैं. अगर आप ये देखोगे, ये नदी है, एक सिंधु नदी है और एक सांस्कर नदी है. अभी अगर आप देखोगे इसमें तो ये मिट्टी वाला पानी आ रहा है. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, और ये वाला मिट्टी वाला पानी कहाँ पे जाएगा? ये सारा का सारा मिट्टी वाला पानी लेके जाएगा अपना बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में, सॉरी. तो जब इसके साथ कई बार क्या होता है, जब फ्लडिंग इवेंट के साथ साथ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे वहां पे जाके, और कई बार जानवर या पेड़ पौधे इसमें गिर जाते हैं, या ये फ्लडिंग के कारण उसको करके अपने साथ ले जाएगा. तो सेडिमेंट के साथ क्या, अगर ये मिट्टी जा रही है और अगर ये फॉसिल आ गया तो ये भी उसके साथ दब जाएंगे जब ये यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं. उसके बाद एक और लेयर आ गई. धीरे 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 करके जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट एनिमल है, वो मिट्टी के साथ साथ पत्थर बनता जाएगा. और जब कई सालों के बाद फिर कोई ओरोजेनी होगी, ओरोजेनी मतलब है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होएगा,
तो ये हिमालय बन जाएंगे जैसे ये बने। ये भी टेथिस ओशन था, पहले समुंदर था। जब इंडिया, आप ये समझिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, ये सब एक थे और फिर इंडिया उससे टूटा चला। अगर ये मान लो ये तिब्बत है और इसके बीच में जो ये मेरी जो शक्ल दिख रही है, मान लो वो ओशन है, उसका नाम है टेथिस। तो ये चलते 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 जब इसे टकराया तो ये मानसरोवर के पास से टकरा के ये देखो ये बन गया और ये हिमालयस बन गया। ये बस इतना आसान था हिमालयस बनना, सारा उठा गए तो दिल्ली से नीचे नीचे। अब जब ये उठा तो उसमें सारे समुद्री जीव जितने भी थे वो सारे के सारे उठ के ऊपर को आ गए। अब ऊपर को आ गए और जहाँ पत्थर तोड़ते हैं यहाँ पे तो उसमें से हमारे को मिल जाता है। और ये जो मोमेंटोज हमने आपको दिए, इसको हमने तोड़ा नहीं है कहीं पे। ये रोड वाइडनिंग हो रही थी वहां पे, तो रोड वाइडनिंग के साथ साथ क्या है, जो ये कोई समुद्र था, ये टेथिस समुद्र, तो उसमें हमारे को पूरे के पूरे ब्लॉक्स ये उन्होंने काट के रखे हुए थे। जैसे हाईवे वालों ने हमारे लिए काट के रखे थे ताकि कभी हम इस इवेंट में बच्चों को वो प्रेजेंट कर सके। और ये जो आपके पास आए हैं ये सबातू सी, मतलब सबातू के हैं। सबातू फॉर्मेशन होती है जो 55 मिलियन साल से 40 मिलियन साल तक के रॉक्स को हम बोल देते हैं। और उनमें से एक ऑयस्टर हमारे को, ये आपको हमने बच्चों को ये सब मोमेंटो दिया है ताकि आपको ये टेथिस की याद दिलाए और वो विशाल समुद्र की याद दिलाए जिसके कारण हिमालयस की उत्पत्ति हुई है। अगर टेथिस ना होती तो हिमालयस ना होता। सारा का सारा जितना भी आप हिमालयस देख रहे हो वो सारा का सारा ओशन बेड है जो अपलिफ्ट होके हिमालयस बन गया है। आज हम लद्दाख की वादियों में हैं और इस सारे के सारे यहाँ पे भी हमारे को बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। यहाँ पे आप हमारे को पाम के फॉसिल्स मिले हैं, ऑयस्टर्स मिले हैं। वही ऑयस्टर्स जो हमारे को सबातू में मिलते हैं वो यहाँ पे भी मिलते हैं और काफी कोरिलेशन इन दोनों के फ्लोरा और फौना के बीच में। तो जब भी आप फॉसिल्स की बात देखोगे तो आप याद रखना कि एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग, ये सब इकट्ठा फेनोमिना है। इसको आइसोलेशन में कभी देखना नहीं है। जो भी चीज बनी है इस धरती पे उसका एवोल्यूशन हुआ है। ये ऑयस्टर्स भी बने थे, कभी ये पूरा राज करते थे, फिर ये भी खत्म हो गए, फिर ये कोई और आ गई, कोई और स्पीशीज आ गई। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये थीम बहुत अच्छी है और लकीली हम भी ऐसी जगह में, मतलब मैं इनसे कल ही रात को कहीं पे सिग्नल आया था, वो बॉर्डर रोड्स वालों से मैंने बात की कि एक थोड़ा सा बात करनी है, तो शिखा जी से बात की थी कि हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि रात रात में थोड़ा क्लियर हो जाएगा रोड तो हम निकल जाएंगे। तो वहां से हम सवेरे चले थे 5 बजे और यहाँ पे आज यहीं पे बिल्कुल संगम में पहुंचे। तो ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब भी आप अपनी बुक्स देखोगे तो ये फॉसिल्स कहानी लिखते हैं। ये सारी हिस्ट्री जितनी भी आप एवोल्यूशन की देखोगे, जैसे चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था कि एक सेल से आप कैसे एवोल्यूशन पूरा देख सकते हो, इन फॉसिल से आप, हर फॉसिल की अपनी कहानी होती है, उस टाइम पीरियड की कहानी होती है कि जब ये मिला था। जैसे डायनासोर्स के मिल जाएंगे तो वो अपनी कहानी बताएंगे। तो इस तरह से जब भी आप कहीं पे जाते हो तो आज की डेट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, BSIP ने, वाडिया ने और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, यूनिवर्सिटीज ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो जब भी आप किसी जगह में जाते हो थोड़ा सा टाइप करो और वहाँ की आपको जियोलॉजी पता लग जाएगी, वहां से आपको रॉक्स पता लग जाएंगे और सारे कौन कौन से फॉसिल्स मिलते हैं। तो जिस भी जगह में आप घूमने जाते हो बेसिकली, तो वहां पे जाओ, वहां से पत्थर इकट्ठे करके लाओ। और अगर आप वहां से देख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जियोलॉजिकल अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूनिवर्सिटी होती है, उसमें जाके आप जियोलॉजी से बात कर सकते हो। वो आपको सारी उस पत्थर की भी कहानी बताएगा और बताएगा कि यहाँ पे आपको कौन कौन से फॉसिल्स मिले थे, आप कितने साल पुराने रॉक्स में घूम रहे हो। जैसे अभी हम देखो यहाँ पे घूम रहे हैं, अगर उस साइड देखेंगे अब तो वो ग्रेनाइट्स है। वो ग्रेनाइट्स है जब थे, जब जिन्होंने हिमालयस को उतनी हाइट दी जो हाइट हम देख पा रहे हैं। और ये जो यहाँ पे सारे ये यहाँ पे ये 2 करोड़ साल पुराने पत्थर है। यहाँ पे हमारे को फॉसिलाइज वुड मिले हैं यहाँ पे। तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, कहीं पे भी तुम चले जाओगे। ये जियोलॉजी और ये रॉक्स है, नेचर से कभी अपने आप को अलग मत रखो और यही तुम्हारे को एक सुकून और एक मस्त अपनी एनवायरनमेंट जीने का मौका देगी। और मैं स्वयं सिद्धा और का इवेंट सक्सेसफुल रहे। शिखा जी ने जो हमारे को ये मौका दिया यहाँ पे बात करने का, हम चाहते हैं कि ये सारे बच्चे अपने जो प्रेजेंट फॉसिल के रूप में लेके जाएं, जो BSIP ने अच्छे से तरह से तैयार कर दी है। क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि हम इसको तैयार कैसे करेंगे, क्योंकि हम बहुत घूमे वहाँ पे मार्बल मार्केट में भी, जैसे बताया इन्होंने। फिर इनका दिमाग चला कि वहां से आप स्पेशलिस्ट भेज दो। और डॉक्टर ठक्कर साहब ने भी बहुत मेहनत की और इसको प्रेजेंट लेके आए।
और हम चाहते हैं कि ये सब फॉसिल्स हम आगे भी ऐसे इसी इवेंट्स में और कैसे देते रहे। कोई भी हमारे से और मदद फॉसिल्स के रूप में चाहिए होगी या एवोल्यूशन के बारे में या कुछ भी नेचर के बारे में वो समझना चाहते हैं, पानी से लेके एनर्जी से लेके, देखिए नेचर का मतलब है कि 5 तत्व, और इन 5 तत्वों को लेके कहेंगे बहुत सरल है इनके साथ जीना। हम एनवायरनमेंट के साथ जी सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी के साथ जी सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं अपने क्लाइमेट चेंज के साथ साथ, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को एक हवा ना समझे, उसके साथ बड़े प्यार से अच्छी तरह से जी सकते हैं अगर हम अपनी नेचर को समझें। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और इस इवेंट की सक्सेस के लिए शिखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्या, आपने कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया कि हिमालय कैसे बना और क्यों वहाँ समुद्र के फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया, और जो आपने ये यूनिक गिफ्ट दी है स्वयं सिद्धा को और सारे बच्चों तक जो पहुंचेगी, दैट इज वेरी एक्साइटिंग। डॉक्टर शिखा के हाथ में भी एक फॉसिल है, तो ये तो इस तरह का मोमेंटो तो कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि ऐसा संभव हो पाएगा, लेकिन थैंक यू सो मच, आपकी वजह से संभव हुआ। और इसके पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको थोड़ा सा नेचर के और करीब लेना चाहता हूँ। अभी देखिए डॉक्टर तेज आर्या तो नेचर के पास ही थे बिल्कुल, और मैं आपको एक ऐसी चिड़िया से मिलाऊंगा जिसकी इंजीनियरिंग देख के आप दंग रह जाएंगे। आपके स्क्रीन पे आ रही है कोई फोटो? डॉक्टर शिखा त्रिपाठी, हाँ, आ रही है। ये जो है ओवन बर्ड है, ये रहती है जहाँ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के ऊपर कैरेबियन सी है वहां पे, और वहां पे बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, टॉर्नेडो आते हैं, तो लोगों के घर उड़ जाते हैं, तो पेड़ पौधे सब बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन इस चिड़िया का घोंसला बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो आप देखो ये कैसे अपना घर बनाती है, और ये डोम टाइप स्ट्रक्चर है पूरा। देखो आप कैसे प्रोसेस पूरा, ये एक इंजीनियर की तरह, इसके बगैर बीटेक एमटेक डिग्री के, शी इज वन ऑफ द एक्सपर्ट इंजीनियर। और यहाँ पर अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो हम घर बनाएंगे, जैसे भारत में अंडमान निकोबार है, हमारा आंध्र प्रदेश है, कोस्टल उड़ीसा है, कोस्टल तमिलनाडु है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोस्टल वेस्ट बंगाल है, जब साइक्लोन आता है तो बहुत सारे घर टूट जाते हैं, बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं। तो वहां रहने के लिए इस चिड़िया से इंस्पायर होकर जो डोम शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऐसे घर बनाए जाने की प्लानिंग है। और अगर ऐसा होगा तो आप सोचिए कितना बढ़िया गिफ्ट नेचर का एक सीख के हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, यही सबसे बड़ा लेसन है। और मैं आपको एक और पानी की बात अभी चल रही थी, क्योंकि डॉक्टर तेज आर्या जो है वो माउंटेन के वाटरमैन कहे जाते हैं। उन्होंने ग्लेशियर जो सियाचिन का था वहां भी पानी निकाल के दिखा दिया था इंडियन आर्मी के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा ये दिखा रहा हूँ, सफेद सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है बेसिकली एक मजार जो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, और इस मजार का नाम है सलीमुद्दीन चिश्ती की मजार है ये। और अकबर यहाँ पे, अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, अकबर यहाँ रहा करते थे। तो किसी को ये हुआ कि वहाँ पानी की क्राइसिस बहुत है, और अकबर को कोई बेटा भी नहीं था। तो किसी ने कहा कि अगर आप पहाड़ के ऊपर जाओगे, वहां सलीमुद्दीन चिश्ती नाम के एक बहुत बड़े संत रहते हैं, अगर उन्होंने आपको दुआ दी तो आपको बेटा होगा। तो अकबर नंगे पैर गर्मियों के सीजन में पहाड़ी पे गया, उनसे मिला, और उसके बाद सलीमुद्दीन चिश्ती साहब ने उन पर दुआ करी और उनको बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम भी उन्होंने उन्हीं के नाम पे सलीम रखा था, अगर आपको याद हो अकबर के बेटे का नाम। मरने के बाद अकबर को बहुत श्रद्धा थी सलीमुद्दीन चिश्ती साहब से, उन्होंने उनकी मजार अपने महल के अंदर बनवा दी फतेहपुर सीकरी में। इसमें खास बात क्या है, इसकी आप बाउंड्री ऐसे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ जितना बरसात का पानी आता है, रेन वाटर आता है, वो सारा इन खंभों से नीचे जाता है। और खंभे क्या है, दे आर हॉलो, ये अंदर से खोखले हैं, और ये सारा पानी आके और ये इकट्ठा होता है यहाँ पे सामने 40 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा और 80 फीट गहरा यहाँ पे एक वाटर टैंक है, यानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी नेचर से पीने के पानी को हम कैसे कलेक्ट करें। कितना बढ़िया उदाहरण आप देखिए नेचर ने हमको दिया है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको फिर से वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत के साथ। अभी फॉसिल की बात हो रही थी, और हमारे जो अगले स्पीकर हैं वो भी इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर महेश ठक्कर, जो डायरेक्टर है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओ साइंसेस के। इज ए वेरी वाइब्रेंट मैन
और गुजरात से भी इनका बहुत बड़ा लिंक रहा है। अभी थोड़े दिन पहले पृथ्वी 2006 फेस्टिवल हुआ था जिसमें पैलियो साइंसेस की फिल्में आई थी और उसमें विदेशों से भी लोग आए थे। एक बहुत सफल आयोजन, जहां जैम पैक्ड ऑडिटोरियम था, लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। इतना बढ़िया फिल्म फेस्टिवल पहली बार भारत में हुआ था पैलियो साइंस पे। और जो डॉक्टर ठक्कर हैं, उनकी खास बात क्या है कि करीब 35 साल का उनको एक्सपीरियंस है टीचिंग का, रिसर्च का, और कई की पोजीशन पे रहे, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन, रजिस्ट्रार एंड प्रिंसिपल एट KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी एंड RR लालन कॉलेज भुज, गुजरात। जो प्रोफेसर ठक्कर हैं, उनका खास काम जो PhD वर्क रहा है वो है कच्छ रीजन के ऊपर, और वहाँ की जो साइट्स हैं, जियोलॉजिकल साइट्स, उन पर रहा है। 130 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हैं। 22 PhD स्टूडेंट उनके अंडर में रहे हैं जिनको उन्होंने PhD दिलवाई है। और सबसे खास बात है कि जो इन्फ्लुएंशियल स्टडी ऑन द 2001 भुज अर्थक्वेक, ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था भुज में, गुजरात में। उस समय डॉक्टर ठक्कर ने बहुत बड़ा काम किया था, और जो थे वो गेस्ट एडिटर भी हैं वॉल्यूम ऑफ द जियो हेरिटेज फ्रॉम पीक एम्बिएंट टू रिसेंट। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके अंडर में चल रहे हैं। ही इज द लीड ऑर्गेनाइजर ऑफ द इनकुआ 2027 ग्लोबल क्वाटरनरी साइंस कांग्रेस। ही इज enhancing India's global scientific footprint. That means आप सोचो कि अगर डॉक्टर ठक्कर इसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं या एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इनका 2027 में, तो ये उनके ही लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर MG ठक्कर, डायरेक्टर मीर बसानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, लखनऊ। सर, यू आर मोस्ट वेलकम। Namaste, namaste. Good morning. Good morning, sir. Can you hear me? Yes, yes. Yeah. So good morning, everybody. It's really my privilege to be a part of Swam Siddha. I'm really blessed to be a part of this August gathering. Sikhaji, namaste. Because of you only, I'm here right now. And Dr. Pradeep Srivastava, I know him very well, and he is one of the, glittering personality of India, not only India, because just now we listened that, yes, you are 10 most distinguished person of the world. So thank you very much inviting me here. See, Thank this you, sir. today, and all distinguished guest, distinguished speaker, and all of us, all of you. I am really blessed to be here. And today, the topic which you have choose, Dr. Shikha Tripathi, you have selected this topic. Listen to nature. Listen to the nature. I think. Listen to the nature and environmental awareness. The second line is learn your lesson. I think learn your lesson. This is very important topic in terms of the listening to the nature. Do you know? Everybody. Because this is, I think, almost 85 participants are there. And some of them are the students, and some of them are their distinguished personalities. Nature, what is the language of nature? That is very important. We must understand the language of nature. In our gathering, there is one person who knows much about this nature's language, Kia Vaswani. I think she understands the language of the animals and plants. But many of us in this gathering, they know the language of rock also. Recently, we listened the personality of Himalayan geology and Himalayan nature, Ritesh. I am really I really appreciate that he is right now in the field, and he has given us all confluence
he has shown us the confluence of two rivers, Zanskar and Sindhu. I think this is the way the today's youth should learn how to speak with the nature, because nature says many things, but we don't have the ability and skill to listen the language of the nature. What kind of language they speak? The nature speaks. Nature means it is everything. The stars we see, the sun, the moon, the mountains, the rivers, everything which we have around us, the biotic and abiotic systems, the fossils, the rocks, they have memory. The human being, we have some memory, but the rocks have memory. Rocks can give us the history of last several thousand years, several hundreds of thousands years, and several millions of years. If we see a small fossil, say for example oyster, some fossils he has gifted to the organization, that fossil is the history of last 50 million years or 40 million years or maybe 10 million years. But the rock which is there in Himalayas or everywhere in India or everywhere on this planet, they say the history of almost millions and millions of years. Maybe sometimes it is billions of years history. So the past environment, past climatic condition, everything is fossilized in the rocks. So we must understand the language of nature, not in the form of just the way we understand, because we have to understand their language. So what language they speak? We have to say like the climate is changed. We said climate change. How it is changed? We see the landslides, the cloudburst. We see the cyclonic effects. We see some birds which comes every day, but every year. But all of a sudden he is not visiting our place. Why? So all of a sudden we have heat waves like. In early days, 10 years back, 20 years back, we didn't have such heat waves. So this is the language of nature. The flood, every year we get a flood, but some decades back we didn't have that kind of flood. We have got urban heat, we have got urban flood systems, we have got the vanishing of the jungles. Okay, so these are the things which we need to understand. So that is the language of the nature. So nature speaks in a different language. We have to understand, and if we are aware about this particular language, then we have the sense of responsibility. And if we get the sense of responsibility for the nature, then we really have to go into the action. So I think this particular awareness campaign through the webinars, it is really needed for the young people. But I believe that the way Ritesh Arya is moving, and we need our youth to go to the field, just leaving their mobile, and you just go to the field and then have experience of the nature. I think I can give one small example, that every day when I go to the for the walking around my place, and when I walk into the garden, I have seen several people, those who are walking every day, and they have their earbuds in their ears. Okay, and they actually are
not listening to the nature, because when I, without earbud, without mobile, when I move into the garden, I can see so many things. The birds chirping, then the cuckoo is, I mean, the sweet voice of cuckoo, and even crow, and squirrels moving, and even the different types of plants. They also speak something, but they don't listen. They just listen. There's some music. Okay, so that is not good. They have to, when they walk, they have to listen to the nature wherever they are. They have to listen to the nature, even if the traffic noise, that also you have to listen. So there are many things we don't actually, the new generation doesn't listen to the nature. So I think because I have to speak just for 5 to 10 minutes, but because I have to give the space to our mentors, experts. So I hope this small efforts would go into the, I mean, at least to our new generation would understand the value and awareness of the environment, and we should have the sense of responsibility. So I mean, we can understand how हम कभी-कभी सोचते हैं कि कैसे हम इस responsibility जताएं, बताएं. तो at least you start with a small thing, that I just leave a छोटा जो plastic का bag है, I just leave using that plastic bag. I try to conserve water. I try to be happy. I mean, don't think negative to others. And मेरा घर और घर का आंगन और घर के बाहर मेरा कॉलोनी, उसको साफ सुथरा रखे. एक छोटा सा प्रयास ये बहुत बड़ा हो सकता है. Because if they follow, if one person follows, everybody follows, then I think entire city, entire country becomes, I mean, positive and clean. And I think awareness will give you the sense of responsibility. Understanding will give you the sense of responsibility. And when sense of responsibility comes, we have to start actioning. And here, most of you are in action. The kind of personalities in front of me and in this gathering, they are always in action. So I congratulate this group, Swayam Siddha, and congratulate to Shikha Tripathi ji, that any time you need my help, not only just cutting the fossil, I can also give you another many fossils from Kutch region, because I have collected hundreds and thousands of fossils, and that can be, if they can be part of the school's asset, I'd love to gift them in the future course of time. And any kind of our help, making awareness through our scientists, because we have almost 100 scientists working in my institutes, and they each have different stories, and each have different flavor to speak with the students, not only in the fossils, but the climate change and the many other aspects. I think those students are there on this particular gathering. They can go to the this website of our institute, and they are most welcome to my institute anytime. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir, for your kind words, your motivation, how small changes can make a big change. And सबसे बड़ी बात है सर, थैंक यू सो मच कि आपकी और डॉक्टर मीता पाटियाल की वजह से ये फॉसिल शेप में आ पाए. और आज की जो वन ऑफ द की नोट स्पीकर हैं किया वासवानी जी, उनसे भी सबसे पहली बार मैं मिला था पृथ्वी 2026 जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में हो रहा था. तो
आप आए सर, आपने टाइम दिया और आपके पास तो भंडार है कहानियों का. आई थिंक यू कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स. आपकी फिल्म भी मैंने देखी थी अभी जो पृथ्वी 2026 में गई थी, जहां यू वर शेयरिंग कि कैसे गुजरात में क्या हुआ था, कैसे कैसे वहां पे भूकंप आए, कौन सी लेयर्स थी, जियोलॉजिकल सारी चीजें बातें आप बता रहे थे. तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर comments, your knowledge, and the best way how we can make a change. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. अब मैं आपको इसके पहले आगे चलूं, थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको और दिखा सकूं. थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई है, तो हम आगे चलते हैं. और हमारे जो अगले स्पीकर हैं वो हैं अगस्टीन वेलिया साहब, जो यूनिसेफ में उन्होंने बहुत सारा समय गुजारा है, करीब 2 डिकेड्स से ज्यादा का. एंड ही इज ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट. मुझे याद है आज से करीब 35 साल पुरानी एक बात, उनका टेलीफोन नंबर मुझे आज भी याद है, लखनऊ में जब वो रहते थे यूनिसेफ में. और वो उन्होंने बताया कि मेरा टेलीफोन नंबर जो है इट्स वेरी सिंपल, 24 अल्लाह एक 247861. 35 साल पहले का वो टेलीफोन नंबर उनके घर का आज भी मुझे याद है. यू कैन इमेजिन a very jovial person, passionate advocate on child rights who contributed to and lead many UNICEF movements, including Child Survival Revolution, Child Rights Movement, Global Movement for Children, Universal Immunization Program, an imaginative writer and publisher, and a convincing and persuasive speaker and presenter. Particularly effective in mobilizing the political leaders, media, civil society, and NGOs. Advocacy range includes the Capitol Hill and Panchayat member in Bihar and UP. Adept at spotting advocacy opportunity and expert at framing advocacy issues. He worked in the most challenging states of India for long spell. I think he was in UP and Bihar, where he spent most of his time while he was working in UNICEF. And he has been also the head Department of Communication, BHAI. So with these words, I welcome Augustine Velias, sir. Please bless us, please guide us, and please motivate us and say a few words on this very important occasion. Augustine Velias, sir. Thank you, sir. I had a small presentation. Shikha, is it going up? Or I will speak. Hello, can you hear me? Hello? Shikha ji, can you make him the host so that he can share the presentation? Yeah, just No, one sec, I- Augustine. Yeah, you meanwhile you can just begin. Let me get your presentation. Yeah, Just fine. one No, sec. I'll begin. Friends, you have heard Dr. Arya speaking all the way from the Himalayas. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Okay. Yeah, you heard Ridesh Arya who spoke from the Himalayas. I am from the other end of India. I live in the most ecologically vulnerable village of India, Panchayat of India called Vellathuval, which is in the Western Ghats, and I'm in Kerala, I'm in the hills. And why I'm connecting back to Lucknow, where I have lived very long. There is one secret about Lucknow which people don't mention. The largest number of scientists in India live in Lucknow. We say everything else about Lucknow, but you just heard the Birbal Sahni Institute principal saying hundreds of scientists there, and you count the number of institutions in Lucknow, there are plenty of scientists there. And its only thing is they don't appear together anywhere. So we don't have a scientist festival or something like that should be in Lucknow. The closest we come to is this one where many disciplines come together. But today I want to go back to the origins. Origins is, we are invited by Swayam Siddha. And actually, you may not know, this is the year of the Swayam Siddha. Because the United Nations has decided this is the year of the woman farmer. So Swayam Siddha is in our home,
in our surrounding. She's right there. She's there as our mother, our sister, everything else who nurtures us. But what I want to say about Swayam Siddha is this, that number one, with this International Year of Women Farmers, there are many things that we need to do. Most of the women who cultivate, they get nothing out of it. A lot of it is taken by middlemen because they sell raw and they don't process anything, and they are not on the track of money, because even if they manage to get something, it is taken away by the men folk. So we need to need to make the Swayam Siddha really Swayam Siddha. I'm talking about the women farmers of India. So one of the things that we can do, incidentally, I do belong to one of the larger farmers collectives in India, and therefore there is a lot of experience and wisdom to offer to women who want to be really Swayam Siddha. And one of the things that they should consider is creating their own farmer producer companies, so that they're not just seen as producers, they're also seen as business people. And it's easy to, and there are so many farmer producer companies in India. It is simple to organize, it can be done. And so that's one major suggestion from me. The second one is, every woman should become a value addition champion. A value addition champion means, they should not sell raw. They should sell it as a processed product, a product which has a brand, a product which has a name, and a product which has a market. So we need, we need women who see the value in it, and the women who can add. Next, you can go on. Next slide, please. Keep going. Hello. Yeah. So they can, they should become value addition champions. So you cannot become value addition champion unless you have a value addition station near you. So that is my next suggestion. Just as there are primary schools in India, we should have value addition stations. And again, it's not a fancy word. It is something which can be done because the government, there are about 53 departments and directorates who are willing to fund this. It's only that people don't ask. It's that people are not organized enough to ask. People don't even know where those funds are. So that's what is now ailing the farmer situation. So to come back to it, there's some women whom I would like to call Swayam Siddha. So women who are self-supportive, efficient in their own way. They should be able to form their own organization. They should be able to get enough training that they can add value to everything and everyone around them. And then they should have value addition stations. They can convert any product. And in a way, it gets 3 times, 4 times the market price. So this is in simple what I wanted to say today. I have a presentation which will, you see the presentation which will be shared with everybody. You should also know, those who have my numbers, those who don't have, the number can be given. Just watch my status every day on WhatsApp, because I put every day something new there at around 6 a.m. So that is a means that we can be in communication, and any one of you intend to start a farmer producers company, I would like to support that. If anybody wants to be a value addition champion, I would like to support your training. And if you want to set up a value addition station, I would like to tell you how. So this is the Swayam Siddha mission, or the Swayam Siddha campaign, that with a large number of farmers that we have started down south in Kerala. I am from the hill district Idukki, and I am in close collaboration with another hill district called Wayanad. And this is how we plan to do it. And I would be visiting Lucknow in the first week of September, thanks to NABARD. So I would like to look up some of you and see whether we can take it further
that we could have Swayam Siddhas not just in Lucknow, all over India. So that is my mission. And if anybody any questions, I would be happy to answer them. And if anybody would like to be in touch, you are welcome to. Thank you. Thank you so much, sir. Is there any question we can ask? I think they are more than happy to listen to you. So नेचर जो है उससे बढ़िया साइंटिस्ट कोई नहीं है. आपको पता है जब पहला बैक्टीरिया बना था तब से अब तक 3.8 बिलियन ईयर्स पास हो चुके हैं, 3.8 अरब साल. और इन इतने सालों में नेचर ने जो काम किया है वो अनोखा है. अभी साइंटिस्ट ने वॉच किया कि अगर आप यहाँ से मान लीजिए अमेरिका जाते हैं, जैसे विक्रम सिंह साहब मौजूद है अमेरिका में इस समय, तो आपको 15-20 घंटे लग जाते हैं, लाखों लीटर एविएशन फ्यूल हवाई जहाज में खर्च होता है, तब आप अमेरिका या यूरोप पहुंच पाते हैं. लेकिन आपने ध्यान दिया अभी जाड़ा आने वाला है, भी साइबेरियन बर्ड्स आएंगी साइबेरिया से, ऑल द वे दे विल बी फ्लाइंग टू इंडिया, और उनको पूरा पता है किसको बर्ड सेंचुरी में कहाँ जाना है, किसको भरतपुर जाना है, किसको लखनऊ के पास नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जाना है. तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये तो बड़ा अनोखा है कि वो 6000 किलोमीटर उड़ के आती है फिर वापस चली जाती है, लेकिन कभी आपने किसी चिड़िया को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हुए नहीं देखा होगा. अभी एक चिड़िया पे ट्रैकर लगा दिया गया और वो जब केप टाउन से उड़ी साउथ अफ्रीका से, तो फिनलैंड तक उसने जो है 10,000 किलोमीटर की यात्रा करी. एक दूसरी चिड़िया पे जब ट्रैकर लगाया गया तो पता लगा उसने 26,000 किलोमीटर की यात्रा करी है विदाउट यूजिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ पेट्रोल या एविएशन फ्यूल. तो साइंटिस्ट अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चिड़िया को इतनी एनर्जी मिलती कहाँ से है, और उसका सीधा सा जवाब है जो वो खाती है खाना अपना, उसी से एनर्जी मिलती है. तो कीड़े मकोड़े, फ्रूट, सीड्स, अगर एक चिड़िया इनसे इतनी एनर्जी डेवलप कर लेती है, वो लाखों लीटर पेट्रोल से ज्यादा है कि वो 26,000 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है, तो क्या फ्यूचर में हम ऐसे हवाई जहाज बना सकते हैं जिनका ईंधन एविएशन पेट्रोल की जगह ना होके वो चिड़िया का कीड़ा मकोड़े उड़ाने हो? इस पे कहाँ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं. तो आप सोचो, नेचर से अगर ये संभव हो पाया, तो आपको याद होगा थोड़ी दिन पहले ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट जो अहमदाबाद से उड़ा था लंदन के लिए, वो क्रैश हो गया था और उसमें इसलिए आग लग गई कि बहुत सारा उसमें पेट्रोल था. तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा संभव हो पाया तो कितना बढ़िया होगा. तो नेचर के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. और इसके बाद जो अगली स्पीकर हमारे सामने है वो बहुत ही, अगर आपको नेचर वाकई देखना है कि नेचर है क्या, तो आप सबसे बढ़िया है उनके इंस्टीट्यूट जाइए जहाँ पे वो डायरेक्टर रही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जो पूरा लखनऊ में है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट वहाँ पे. और शी इज बेसिकली वो रेलवे से जुड़ी रही हैं, आशिमा सिंह जी. वो IRTS है यानी IS अलाइड 1979 बैच की, और इरिटम यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की डायरेक्टर रही हैं. और वर्क एज द रेलवे साउदर्न ईस्टर्न रेलवे कोलकाता एंड बिलासपुर ऑन एनी रेलवे लखनऊ डिवीजन. और वो DRM भी रही है रेलवे की. आपको पता है बहुत बड़ा पद होता है किसी रेलवे अधिकारी के लिए, जहां NER लखनऊ यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की वो DRM रही हैं. विजिटिंग फैकल्टी हैं एट IIMs और बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की. कई जगह नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके पेपर पब्लिश हुए हैं, किताब भी उन्होंने लिखी है. और उसके बाद GMNMR अवार्ड रिसिपिएंट भी. तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं. कभी आपको मौका लगे तो आप जाके उनका जो इंस्टीट्यूट है जिसका मैंने आपको बताया, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ में है, वो देखिएगा. नेचर से बढ़िया वो कोई जगह नहीं. उसे वहां पे आपको 100 तो पीकॉक मिल जाएंगे उड़ते हुए आसपास. वाइल्ड लाइफ इतनी दिखेगी, वहां सांप आपको मिल जाएंगे, कछुए मिल सकते हैं, बहुत सारी बर्ड्स मिलेंगी, और खूब हरा भरा कैंपस है, इतना बढ़िया कि एक मिनी फॉरेस्ट लगता है. वाटर मैनेजमेंट पूरा अगर आपको देखना है तो यू कैन लर्न फ्रॉम डॉक्टर आशिमा सिंह जी, कैसे उन्होंने वहां पे पानी कंजर्व किया है. तो वो एक उनके लिए, जहां वो DRM थी रेलवे के, जब वो इरिटम पहुंची, उस रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पहुंची, तो उन्होंने सारे आइडियाज लगा दिए. और जब उसके आप आसपास पहुंचते हैं तो 2 डिग्री टेम्परेचर आपको कम लगता है. तो विद दीज वर्ड्स आई इनवाइट आशिमा सिंह जी फॉर हर काइंड वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन एंड गाइडेंस.
Shubha Singh ji. Can you hear me? Yeah, yeah. Okay. So प्रदीप, आपने इतनी ऊंची ऊंची बातें कही कि अब मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है कि भाई बच्चे जब मुझे सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल बेकार, प्रदीप जी ने पता नहीं किसकी तारीफ की थी। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग सब बराबर हैं, तो आपस में हम लोग शेयर करना शुरू करते हैं। अभी बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स को हमने सुना और उन स्पीकर्स को सुनकर मुझे ध्यान आया कि जैसे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा कि हम जब जाते हैं सवेरे घूमने या टहलने तो अपने कानों में ईयरबड्स लगा लेते हैं। ऑगस्टीन ने कहा ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स है। और रितेश ने कहा कि हमारी पृथ्वी इतनी पुरानी है कि उसमें हमें फॉसिलाइज रूप से सब कुछ मिल जाता है। तो इन्हीं सब विचारों के ऊपर मैं सोच रही थी और मैं सबसे पहले तो ऑगस्टीन को बताना चाहूंगी कि भाई विमेन फार्मर, मैं और कुछ नहीं, मैं केवल एक विमेन फार्मर हूं। तो बहुत ही आनंद आता है जब आप खेत में खुद जाके और अपने सामने अपनी लगाई हुई चीज को बढ़ता हुआ देखते हैं। वो आनंद आपको किसी भी और चीज में मिलना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए मुझे कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियां याद आ गई जो उन्होंने डैफोडिल्स के लिए कहा है। ज्यादातर ने ये कविता पढ़ी होगी, लेकिन ये अभी जो बातें हो रही थी उनसे बड़ी रेलेवेंट है कि 10,000 saw I at glance, tossing their heads inside arms. Waves beside the dance, they outdid the sparkling waves with glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So साथियों, अगर हम एक बार डैफोडिल्स के साथ नाचना सीख लेंगे, नेचर के साथ खुश होना सीख लेंगे, तो हमें किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार हमें ये नहीं लग सकता कि हम अकेले हैं। The entire experience with nature transforms our loneliness into solitude. And solitude is one thing which gives you pleasure without any external support. तो जिस विषय पे हमने अपनी बात आरंभ की थी कि प्रकृति के साथ संवाद, हम उसी विषय पर आते हैं कि प्रकृति के साथ संवाद करना यदि एक बार आपने सीख लिया तो आपको फिर बाकी सारे संवाद तर्कहीन लगने लगेंगे। आप उसी में प्रसन्न होना अपने आप सीख लेंगे। आपको अंदर से एक नई जिजीविषा आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो यही सोचकर बच्चों को भी, यही हम सब बड़ों का यही कर्तव्य है कि बच्चों को सिखाएं कि वो प्रकृति के साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा रहें और कैसे ज्यादा से ज्यादा उसके साथ संवाद करें। मुझे बचपन की जो भी मैंने कथाएं पढ़ी हैं वो याद आती है, तो लगता है कि क्या क्या संदेश प्रकृति हमें दे देती है, बहुत कुछ सिखा देती है जो हमें कोई भी और सिखाने में सक्षम नहीं है। मुझे तो सुमित्रानंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, हरिऔंध जी, सबकी अपनी बचपन की प्रकृति के बारे में लिखी हुई कविताएं आज भी याद हैं। और वही याद आता है एक बार, जैसे दिनकर जी की कविता आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक जंगोला। तो एक कवि यदि वह प्रकृति से संवाद नहीं करते, यदि उन्होंने चांद को
अंदर से अपने अंतर मन से देखने की चेष्टा नहीं की होती तो वह ऐसे काव्य की रचना नहीं कर पाते जैसी उन्होंने की। दिनकर जी तो यहाँ तक कि अब अगर हुंकार भरना चाहते हैं तब भी वह किसको एड्रेस करते हैं, किसे माध्यम बनाते हैं, हिमालय, कि अब तेरे मौन रहने का समय नहीं आया है, तू हुंकार भर। प्रकृति जब हुंकार भरेगी तभी न्याय संभव है। जो कहते हैं ना वो, हमारे तो धर्म ही हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से लगातार संवाद करें, हम पत्थर से लगातार संवाद करें। जो एक कहते हैं ना, मानिए तो शंकर हैं, कंकर हैं, अन्यथा। तो एक कंकड़ एक पत्थर से संवाद करके हम उसे जीवंत बना देते हैं। तो प्रकृति के साथ हमारा संवाद हमें जीवन दान देता है। जो रितेश जी ने कहा कि हम क्या हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व शरीरा। तो हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा प्रकृति से ही बना हुआ है। इन 5 तत्वों को धारण करके हमारे शरीर की संरचना हुई है। इन सब से हमें संवाद करना मतलब अपने आप से संवाद करना है। तो जो हम लोगों ने बच्चों की अवधारणाएं देखी, उनके जो आए हुए संवाद सुने, उसको सुन के बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि हाँ, हमारे बच्चे अगर एक बार प्रकृति से संवाद करना सीख जाएंगे तो उसके बाद उन्हें ये किसी भी बाह्य सोशल मीडिया या अपने कान में कोई बाहर का म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें प्रकृति का म्यूजिक अपने आप सुनाई देगा। और प्रकृति हमें बड़े अच्छे अच्छे लेसन सिखाती है। जैसे हरिवंश जी की एक कविता मुझे आज तक याद है, जहाँ वो कहते हैं कि एक बार छिड़ गई भैंस या हवा और सूरज में, कौन अधिक शक्तिशाली है, हम में तुम में। तो उसमें हवा और सूरज उन्होंने देखा कि दोनों की प्रकृति देखो तो हवा तो बहुत शोरगुल मचाते हुए आती है, धूं धां फू फा, अपना सारा का शायद कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम आ गई है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही होगी। पूरे संसार को रोशनी देता है। शायद मेरी आवाज की कुछ समस्या है, तो चलिए हम हमारे पास बहुत से और मौका हैं, हम उनको सुनते हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग बच्चों को जागरूक करें इस मुहिम के प्रति, वो देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। काफी जागरूक चुके हैं। हम पास 64 एंट्रीज आई, जो अपने आप में दिखाता है कि हमारे बच्चे संवाद करना सीख गए हैं। इसका यह अर्थ है कि हमारा भविष्य ज्वलंत है, हमारा भविष्य आगे है। वो ऐसा नहीं होगा जैसा कि हमने बताया आपको, हमारे बच्चे बनाएंगे एक नए युग, एक नए वातावरण, एक नए पर्यावरण को देंगे। इसके साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आशिमा जी आपके इन वचनों के लिए और नेचर के, प्रकृति के पास जाने के। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की बात आ गई। आपको याद होगा उनके एक गाना था कि प्रकृति के पास तो नहीं, लेकिन वो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। लेकिन आजकल का जमाना क्या है, मैं और मेरा मोबाइल अक्सर ये बातें करते हैं। हमारे पास शायद समय ही नहीं बचा है कि हम प्रकृति से जुड़े जाने। मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ, बहुत मजेदार है। प्रकृति के ऑब्जर्वेशन से क्या संभव हुआ। आजकल हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, एक दिन से ज्यादा शायद नहीं पहन पाते। मैक्सिमम 2 दिन आप एक शर्ट पैंट पहन लोगे, उसके बाद वॉशिंग मशीन में चला जाता है धुलने के लिए। और आप सोचिए दुनिया के 700 करोड़ लोग हैं, तो उनके कपड़े जब धुलते होंगे तो कितना डिटर्जेंट, कितना पानी खर्च होता होगा। लेकिन उसके बाद आपने कोरोना के टाइम में रामायण देखी होगी। रामायण में सीता जी को एक ऋषि की पत्नी दिव्य वस्त्र देती है और कहती है ये वस्त्र कभी गंदे नहीं होंगे। अब सवाल है कि ये वस्त्र क्या आज बना दिए गए हैं, तो उसका जवाब है हाँ। और वो
वस्त्र कैसे बने मैं आपको बताता हूँ। प्रकृति के जो दो उदाहरण है, एक तो हमारा राष्ट्रीय जो फूल है कमल, उसके अगर आप पेटल्स को देखो, उसकी पत्तियों को देखो, और जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है पीकॉक मोर, उसकी फेदर्स पे कभी भी डस्ट नहीं टिकती है, पानी नहीं टिकता है, वो रोल करके चला जाता है। तो इन दोनों से सीख के नैनो क्लास बना लिए गए हैं। लेकिन जिसपे क्या होगा कि अगर चाय गिर जाए, कॉफी गिर जाए, छोले भटूरे गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, आप ऐसे हाथ से कर दो, साफ हो जाएंगे। ये कपड़े मेरे पास भी एक पैंट शर्ट है, जब मैं विदेश जाता हूं तो लेके जाता हूं। आप 15 दिन बगैर धोए आराम से पहन सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके जहां पर पसीना आता है वहां पे जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल की कोटिंग होती है, जिससे वो स्मेल नहीं आती है। लेकिन अफसोस ये है कि ये दिव्य वस्त्र भारत में नहीं बने, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में बने, जहां भी विक्रम सिंह जी मौजूद है वहां पर ये दिव्य वस्त्र बने। तो कितना बढ़िया वो था हमारे सामने कि हमारे देश में प्रकृति से कितनी चीजें हैं। मेरा एक लेक्चर है लर्निंग साइंस फ्रॉम नेचर, जो करीब 3 घंटे का है, और उसमें ऐसे ही विलक्षण बहुत सारी चीजें हैं। तो लगता है प्रकृति के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। जो उसने मार्वल्स किए हैं, जो मिरेकल्स किए हैं, उसके सामने हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। तो हम चलते हैं अगले स्पीकर की ओर। और इनसे भेंट मेरी हुई थी पृथ्वी 2026 फिल्म फेस्टिवल में, जहां बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, जहां के निदेशक अभी डॉक्टर एमजी ठक्कर साहब बात कर रहे थे आपसे, उनके यहाँ यह हुआ था। जब मैंने किया वासवानी जी को पहली बार सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ये पत्थरों से बात करती हैं। और मैंने तुरंत जो है सबसे पहले शिखा त्रिपाठी जी को बताया कि मैंने एक विलक्षण महिला मिली है, और अगर आप उनको अपने कार्यक्रम में बुलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। शिखा त्रिपाठी जी को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, कि उन्होंने कहा कि इस साल तो हमारा थीम ही है कि हम नेचर के पास कैसे जाएं, नेचर को कैसे ऑब्जर्व करें, नेचर से कैसे सीखें। तो उनसे कांटेक्ट किया और मुझे बहुत खुशी है कि वो तैयार हो गई। बेसिकली किया वासवानी जी एक फिल्म डायरेक्टर हैं, और फाउंडर ऑफ स्टोरी ऑफ बीइंग है, और एजुकेटर है, सर्टिफाइड टेलीपैथिक कम्युनिकेटर हैं। आप देखिए कितनी विलक्षण चीज है, टेलीपैथिक कम्युनिकेटर। Raised in a creative progressive family from Raipur, Chhattisgarh, Kia is a self-trained national award-winning documentary filmmaker and founder of Story Loom Films. Inspired by her mother, stories and father's photography, Kia developed herself as a storyteller. Amongst many accolades, she won the National Film Award for the film Deeps of Maheshwar in 2016. Featured in Forbes magazine, she has been a TEDx speaker and she had made 42 plus films in last 10 years. और मुझे याद है कि जो अभी फिल्म फेस्टिवल हुआ था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज में, उसमें भी किया जी की फिल्म को एक अवार्ड मिला था और उनको सम्मानित किया गया था। सो विद दीज वर्ड्स, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू वेलकम एंड इनवाइट किया वासवानी। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, द प्लेजर इज ऑल माइन एंड थैंक यू सो मच शिखा मैम। अच्छा, एक चीज जरूर हो सकती है, बिकॉज क्या है कि मेरी अभी एक फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप ऑलरेडी चल रही है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज का इशू हो सकता है। तो डू लेट मी नो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो देन आई कैन चेंज माय सेटिंग्स अकॉर्डिंगली, बट आई होप यू गाइस कैन हियर मी। Absolutely, Kia. Okay, great. So I am very excited actually to talk about हम जानवरों से और पेड़ पौधों से कैसे बात कर सकते हैं। The interesting thing would be कि before we move on कि ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन क्या होता है, नेचर कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसी चीजें होती है। मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, इट्स अ 10-minute वीडियो on Anna Britton Batch. So Anna Britton Batch, globally she is known as a telepathic communicator, और उनका एक्सपीरियंस एक वाइल्ड ब्लैक पैंथर के साथ कैसा था। सो लेट्स वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ऑल्सो मुझे प्लीज आई थिंक शिखा मैम आपको एक बार मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा, सो आई कैन शेयर द लिंक। All right. So, Dr. Pradeep, Kia को please host बना दीजिए, आपके पास है। Can you do that, Dr. Pradeep? Yeah, please. Yeah, she's the host now. Okay, great.
एक बार मुझे बताइएगा कि अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है. Even after everything that I've experienced with Anna and spending all that. आवाज आ रही है? Perfect. Perfect. Even after everything that I've experienced with Anna and spending all that time with her, there's that scientific controlled, sort of rational part of my brain still has doubts. So I wonder what it will take to totally convince me. In the course of my work, I had come across the story of Jörg Olsen, an ex-policeman turned conservationist. Jörg and his wife Karen set up the Jukani Predator Park. Here, many big cats rescued from bad zoos and canned hunting farms are offered a home and get lifetime care. Jörg has a remarkable relationship with his cats and he handles them in a way I have seldom seen before. But there was one big cat here that he did not know what to do with. This black leopard, called Diablo, had been rescued from a European zoo where he'd been abused. That experience had made him suspicious and vicious. All he did was sit in his night shelter and snarl at anyone who came close to him. 6 months in, and Jörg was at a loss as to how to deal with this cat. That whole atmosphere there was a vibe of aggression and of I hate you and I will kill you. And the one encounter I had with him, he sent me to hospital, 1 bite, 1 week. He's a dangerous cat. He's very, very dangerous. He's towards me and towards everybody else. In my opinion, the chances of an animal communicator changing that, it'll take a lot to convince me. I honestly do not believe that an animal can talk to a human or communicate with a human. I've had animals my whole life. We give them commands, we give them instructions, and they do it as we habituate them, basically. But I'm very skeptical to think that an animal like Diablo will communicate or can communicate with humans. I am desperate, however. I do not want to lose him. I made sure that Anna had no information on Diablo or his history before she came to speak to the black leopard. I was nervous to see what would happen, as this animal never let anyone near his night shelter without a lot of snarling and growling. But the minute he saw Anna, he calmed down and let her kneel right outside and look at him. This beautiful black leopard that you've asked us to communicate with is very overawed by his new surroundings, having come from a very cramped and stressful place for him. That this place has been provided for him, but he's been quite conditioned by a very unfortunate past. He doesn't want much to do with humans as a result. He's immensely powerful, and I mean not just physically, which you well know and respect, but he's immensely powerful with a wisdom and an energetic presence and personality that is far bigger than anyone has ever appreciated about him before. And he commands a certain amount of respect for that. Again, not in a needy way, but really just by virtue of who he is as a being.
There's a very particular thing about his name, Diablo. He wants that name changed because he doesn't like the associations with it, the blackness, the darkness, the diabolical. And when asking him about his past before coming here, he shows concern for 2 young cubs that were next to him. He's asking what happened to them with a great sense of care and concern. We actually forgot about that. When we went to fetch him, there was so much excitement about bringing him back here. It actually slipped my mind until she said, he asked about the 2 cubs. And then we've remembered there were 2 little young leopard cubs next door to him that came from Rustenburg. And they were sort of semi-wild. They weren't hand-reared. And it just slipped my mind. And when they talked about it, I couldn't believe, I actually did believe it. I mean, then I really believed that they were communicating. When she communicated with him, and when we spoke to her and she relayed all the information back to us, firstly I didn't believe her. You know, it's things that anybody can think out, and you can think, and then she said something about the cubs that were with him. And that changed this whole thing, because now all of a sudden, that's something that she didn't know about. And I've also reassured him that you have no demands of him here, that you're quite happy to not make any physical demands of him or any expectations for display or interaction, that you're really willing to let him be how he wants to be. And that's given him an enormous sense of relief. Yeah. And having told him that is for the first time made him actually genuinely interested in now exploring a bit further. Now that he feels that he's not being asked to come out more, he's genuinely interested in being relaxed enough to have a natural curiosity come out and to actually expand his horizons a bit. And Yeh was just stunned when the black leopard walked out of his night shelter into the larger enclosure later in the afternoon. In the 6 months that the cat had been here, Yeh had never seen him out of the night shelter. He then decided to rename the leopard Spirit. We told him that same afternoon that we're not going to call him Diablo anymore. And we understand and we agree with that the diabolical side of it. That's not what he is to us. And we'd like to change his name to Spirit. As I walked to him, I thought, listen, he asked about the 2 young leopards. And I thought, well, I'm here now, there's nobody else here. I'm not going to look like a fool if he ignores me. I'll tell him what happened to those leopards. And as I called him and I said Spirit, and he was looking at me, he was lying like that, I said, with regard to the 2 little leopards, I just want to assure you and I want to tell you that they're safe. And I couldn't help it. I just said to him, wow, you're beautiful. Beautiful. Oh, that's mooi. That's mooi. And he gave me that, oh. And I thought, what's happening here? And I said to him, you understand what I'm telling you if I say to you that you're the most stunning cat? Oh. And I spoke to him and he answered me about 19 times. And he just sat there and he was totally relaxed. It's the first time since we had him that I felt at ease with him. I felt that he was relaxed and he understood me. It was, to say that I don't know what it feels like for him. For me, it was the most amazing moment. Later that afternoon, Anna came back to check up on Spirit and to see how he was doing. I'm asking him now about how he experienced the communication from Jochen through the fence. And he said it's the first time that someone has directly expressed to him verbally appreciation for who he really is, not how they see him to be. And that really surprised him. He shows me an image of literally stopping in his tracks by surprise at that sense of just this wall of appreciation coming towards him. He is so relieved that nothing's being demanded of him here. He's just so relieved. It's like this weight is lifted from his shoulders. And when he was grunting back, he said he was saying thank you for the thank yous. So for each thank you he was getting, he was saying thank you back.
Is there anything you'd like to say about that feedback? I think we'll talk about this a bit later. I can't listen. So we'll talk about this later. It's unbelievable. I'm overwhelmed. It's two different animals. It's two totally different personalities. We had a snarling cat, angry at everything, upset about being here, hating humans, hating us for having him here, you know, ready to kill in an instant. To this relaxed black leopard that's lying on top of his log in his shelter is this attitude of you recognize me for who I am now. And it's amazing to talk to him and get the talking and get him to talk back to us. हेलो एवरीवन अगेन जब भी मैं ये वाला वीडियो देखती हूँ it always makes me very emotional because I'm 36 right now and when I was growing up मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये जो compassion जो आया है animals को लेके एक empathy जो है एक तो I was born with it and the reality is that everyone, each one of us is born with that compassion for each other. अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे, जब छोटे बच्चों से मिलोगे, कितनी बार होता है ना कि छोटे बच्चे बोलते हैं अरे मम्मी बिल्ली ये बोल रही है, डॉग ये बोल रहा है, पेड़ ये बोल रहा है, और हम जो बड़े एडल्ट्स जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं उस चीज को क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बट अगर आप सब अपना और बचपन याद करोगे और क्योंकि we have a wide range of listeners here, we have like school students and us and senior people as well. तो जब आप याद करोगे तो आपको realize होगा कि this is something that came very naturally to us. A good example would be कि जब भी हम छुट्टी की बात करते हैं हम आधे से ज्यादा लोगों को नेचर के पास ही जाना होता है. कोई ये नहीं कहता कि मुझे कंक्रीट जंगल में जाके रहना है. Everybody wants to be with nature. So first we need to understand that each one of us, when we are born, when we are young, when we are a child, we are naturally speaking to nature. We are naturally doing that. Every day we are having this conversation. But जब हम बड़े होते हैं और जिस टाइप का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है across the world, वो हमको ये empathy जो compassion इस चीज के बारे में ना बात होती है nor it is being acknowledged. So gradually we all are taken away from nature and told that nature अलग है और इंसान अलग है, animal अलग है और इंसान अलग है. बहुत जल्दी हमको धरती से अलग कर देते हैं. Nobody actually teaches us that we are just one consciousness. We are also animals, right? They are human animals and we are not like non-human animals. So and the reason why I showed this small clip is for everyone to understand कि हम अपने आसपास जो जिन चीजों को जिन कनेक्शन को हम भूल गए हैं it is already there. हमारा एंड मुझे तो बहुत दुख होता है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं हमको जिस तरीके से आजकल हम जानवरों को ट्रीट कर रहे हैं and what is going on in India, it is because we are not like it is not acknowledged that we can telepathically communicate to animals. The difference between me and everyone here is कि मैं अपनी awareness पे वापस आ गई हूँ. आपके साथ जो conditioning हुई है, जो ये अलग करवाया गया है, अभी उसी condition में हम जी रहे हैं. So let's start with what telepathic communication is
एंड हम क्या करेंगे कि हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के, और मैं किस तरीके से जानवरों से बात करती हूँ। सबसे अच्छी चीज है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये जादू है, कुछ भी नहीं है। अभी जब हम बात करेंगे आप लोग रियलाइज करोगे कि अच्छा ये तो हम लोग शायद हर रोज कर रहे हैं इस चीज को। लेट मी शेयर माय, just give me a minute, I will open up my presentation. Yeah. Okay, great. So now let's talk about what telepathic animal communication is. हम इस चीज से क्या समझते हैं जब हम टेलीपैथी के बारे में बात कर रहे हैं, वो exactly क्या है. So before I move on to what telepathy is, first let's understand what is energy. See, energy is something that we all experience every day. Energy के अलग अलग नाम हैं, जिसको हम vibrations कहते हैं, जिसको हम वाइब्स भी कहते हैं, एनर्जी हो गई, फ्रीक्वेंसीज हो गई, ऐसे बहुत सारे नाम हैं. एंड दिस इज समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस एवरी डे. एंड इलेक्ट्रिसिटी वुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट, कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, बट कैन वी सी इट? नो. बट स्टिल हर रोज हम अपने घर में हम लाइट जला रहे हैं, हम पंखा चला रहे हैं, हम फोन पे बात कर रहे हैं. आधे से ज्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी है वो आज एनर्जी पर है. उसी तरीके से हमारी जो अपनी बॉडी है, इट ऑल्सो हैज एनर्जी. एवरी बीइंग ऑन दिस अर्थ, मतलब काफी सारे लोगों ने टेस्ट किया है कि वी ऑल हैव दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट इज गोइंग इन आवर बॉडी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी कहते हैं, और जो कि साइंटिफिकली मेजर भी कर सकते हैं, राइट. सो जब हम बात कर रहे हैं कि वी आर हैविंग दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वी आर हैविंग दिस टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, it simply means that we are having an energy to energy conversation, जिसको आप subtle energy कहते हो, attention या awareness कहते हो. Now let's talk about telepathy. Telepathy comes from two words, tele and pathos. Tele means long distance or far away, and pathos is a feeling. So जब हम इन दोनों चीज को कंबाइन करते हैं, टेलीपैथी, एंड अच्छा एग्जाम्पल हमारी रियल लाइफ में ऑलरेडी है, जैसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप, टेलीफोटो लेंस, टेलीविजन. इट सिंपली मीन्स जो भाई जो चीजें दूर है, हम दूर बैठ के उस चीज को देख रहे हैं. एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, we are also realizing that it is not, it's not magic. This is something which is like we're listening to this every day. And इस चीज को हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं. और हमारा जो इंट्यूशन है, हमारे वो 5 सेंसेस में हमको फील होता है. कितनी बार आई एम श्योर आप सबके साथ ये चीज हुई होगी कि आपने किसी के बारे में सोचा और उनका फोन आ गया, एंड यू आर ऑलवेज लाइक अरे यू नो व्हाट, मैं आपके बारे में सोच ही रहा था, और आपने फोन कर दिया. जहाँ पे और यहाँ पे जिन लोगों के पास पेट्स हैं, चाहे कैट्स हो, डॉग्स हो, हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया है. इवन अगेन इफ यू नॉट अवेयर अबाउट टेलीपैथी, कि आपके आने से पहले आपके समहाउ डॉग या कैट को ऑलरेडी पता चल जाता है, दे आर सिटिंग एट द डोर. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट रूटीन, अगर आप टाइम भी बदल दोगे तो भी उनको पता चल जाता है. और एक और अच्छा एग्जाम्पल होगा व्हेन यू कैच अ फीलिंग. कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, किसी के घर जाते हैं, देयर इज समथिंग दैट वी फील, राइट. व्हेन वी मीट अ पर्सन वी फील हैप्पी. हो सकता है कि शायद वो हमारे पुराने दोस्त भी नहीं हो, बट वी आर ऑलवेज कैचिंग दिस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस और समथिंग एल्स, जिसको हम नाउ वी कॉल इट टेलीपैथी, इंट्यूशन, एनर्जी, राइट. एंड इंटरेस्टिंग चीज हमारे यहाँ ये है कि जो टेलीपैथी की जो हम बात कर रहे हैं, और अभी जो टर्म आ गया है, साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन देयर इन द एंशिएंट टाइम. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट महाभारत, महाभारत में एक कैरेक्टर है संजय, और संजय, जब महाभारत की वॉर होती है, जो धृतराष्ट्र हैं, हु इज ब्लाइंड, हु इज अ ब्लाइंड किंग, उनके बगल में संजय बैठा हुआ है, एंड संजय इज द वन विदाउट फिजिकली बीइंग देयर एट द वॉर, he is able to describe every detail that is going on there. Now imagine, हालांकि ये कहानी ही है, but आप सोचो कि ये चीज, जब तो टेलीपैथी की कोई बात नहीं हो रही थी, how is it happening? How somebody is perceiving something so far away without being there? So
This is the example that I'm sharing. I am not saying कि अच्छा ऐसा हुआ ही था और ये scientifically proven है. No, I am not a scientist. तो मैं जब यहाँ पर टेलीपैथी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सिंपली अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ. सो दिस इज समथिंग जो कि हमेशा से होता आ रहा है. आप ट्राइबल, जब आप जंगल में जाओगे आप ट्राइबल से मिलोगे. नेशनल पार्क्स जब हम जाते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि गाइड्स को पता होता है कि टाइगर यहाँ गया वहां गया, एंड इट ऑलवेज मेक्स यू वंडर दैट हाउ इज दिस हैपनिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट, अच्छा हम आगे क्या करेंगे? आगे आई विल गिव यू अ छोटू सा एक्सरसाइज टू help you experience what I am experiencing when I'm saying that I can talk to animals. And before moving on to कि हम किस तरीके से communicate करेंगे, let's talk about and have a look at few people who are already doing work around this. So this is Dr. Rupert Sheldrake. He is a biologist, botanist, और इन्होंने morphic resonance पे काम किया है, and there is a book that he has written that how does your dogs know when you are coming back home. So he is one of the scientists who has done a lot of research. So if any one of you is interested, there is a 1-hour lecture called Evolution of Telepathy, where he's talking about his experience, his experiments. तो अच्छी चीज ये है कि आज के जमाने में लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये हवा में इसके बारे में बात नहीं हो रही है. Then we have Carl Jung. He is a very famous psychiatrist. जिन्होंने अगेन जो हम कोइंसिडेंस मोमेंट की बात करें कि किसी को फोन, हमने किसी को याद किया और उनका फोन आ गया, how is he doing, how like this is happening? He has done a lot of research, so again you can Google it. Then we have Jane Goodall. I'm sure Jane Goodall के बारे में सबने सुना होगा. She is no more, but she has done a lot of research on chimpanzees. और जहाँ पे Jane Goodall को बोला गया था कि आप साइंटिस्ट हो और आप चिंपांजीज को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करो, आपको उनको फीलिंग्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. जब उन्होंने उनको नोटिस करना चालू किया, शी इज लाइक आई कैन नॉट डू दैट. आई नो दैट द एनिमल सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी हैज एवरीथिंग एंड दे फील एवरीथिंग, दे केयर फॉर एवरीथिंग. तो मैं उनको सिर्फ एज अ सब्जेक्ट में ट्रीट नहीं कर सकती. एंड शी इज द वन हु चेंज द परसेप्शन अबाउट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस in animals. Then we have Conrad Lorenz, जो कि zoologist थे. इन्होंने भी अगेन एनिमल्स के बारे में और उनके इमोशंस के बारे में काफी ज्यादा बात की है. सो यू कैन प्लीज फील फ्री टू गो एंड सर्च अबाउट दीज साइंटिस्ट. Now let's talk about how does this actually work when I'm saying that हम telepathically बात कर रहे हैं. अभी जैसे यहाँ पे मेंशन मैं कर रही थी कि हमारे जो इंट्यूशन है, जो गट फीलिंग, और इंट्यूशन एक ऐसी चीज है जो हम फील करते हैं और शायद हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट दिस इज लाइक लिटरली गारंटीड दैट ईच वन ऑफ अस एक्सपीरियंस दिस एवरी डे इन आवर लाइफ. कुछ होने से पहले पता चल जाना, मन में वो चीजें दिख जाना. तो होता क्या है कि जो हम एनर्जी फील्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें आसपास दिखती नहीं है, we are constantly surrounded by this invisible energy field, जिसको एक तरीके से आप हार्ट सिग्नल्स भी कह सकते हो. एंड अ गुड एग्जांपल इज लाइक व्हाट इज रिटन हियर, अ रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो हम रेडियो कैसे करते हैं कि जब हमको मान लो कोई चैनल सुनना होता है, तो अभी तो बहुत इजी हो गया कि आपने फोन पर क्लिक किया एंड यू नो इट्स जस्ट टेक यू फ्रॉम वन चैनल टू अनदर चैनल. पहले ऐसा होता था, हमने बहुत एक्सपीरियंस, यहाँ से पे काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम उसको एडजस्ट करते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी को, कि कहाँ हमको वो रेडियो की आवाज सुनाई देगी. सिमिलरली जब हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सो इट इज थ्रू दीज फ्रीक्वेंसीज. What we are doing is that in our body, in our mind, we are adjusting that frequency जहाँ पर हम एनिमल को या प्लांट्स को सुन सकें. टॉकिंग अबाउट कि हमारे अभी जो कम्युनिकेटर्स हैं that are already there, एना ब्रिटन बैच की अभी हमने एक छोटी सी क्लिपिंग देखी थी. इनकी 1 घंटे की ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है. आई वुड सजेस्ट गो एंड वॉच दिस फिल्म. Penelope Smith is again a wonderful animal communicator from 1970s, and we have Amelia Kincaid. And in India, जिनसे मैंने animal communication सीखा है, she is Manjiri Latte from Pune. She is an NLP coach. She is animal communicator coach. And trust me, the way I have learned animal communication, it was only her who made me understand कि this is something जहाँ पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कि हमें एनिमल कम्युनिकेशन करना है, हमें आंख बंद करके बैठनी है, बहुत सारा मेडिटेशन करना होगा. इट्स नॉट दैट. इट हैज टू कम सो इजी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, इट इज ऑल्सो देन व्हेन आई एम एबल टू लिसन टू एन एनिमल.
So what I would also suggest, whoever wants to learn animal communication, I am not yet into teaching. She's one of the finest animal communication coach out here in India. So go and search her. It's called Earthwise Pune, so you can learn from her. She's fantastic. Now, अब हम मेन चीज पर आते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स हमसे कैसे बात करते हैं या नेचर से हम कैसे बात करते हैं. देखो, हमारा जो गट फीलिंग है, जो इंट्यूशन है, इट ऑल कम्स फ्रॉम आवर 5 सेंसेस, राइट? We can see things, we can hear things, we can feel it, we can smell it, we can taste it. So when I'm saying that we are talking to animals, it is majorly these 3 areas. To give you an example, जैसे let's say कि I have this beautiful black tuxedo cat Bulla. अब जब मैं अपने कैट बुल्ला से बात करूंगी कि लेट मी मे बी आई विल आस्क कि बुल्ला, कैन यू टेल मी कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? सो व्हाट आवर एनिमल्स एंड प्लांट डू इज, जिस तरह हमारी इमेजिनेशन काम करती है, उस तरीके से एनिमल्स हमारे ब्रेन में ये जो इमेजेस हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं. तो मन में हम कैसे सोचते हैं? मान लो अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि आप सोचो कि आपकी लास्ट हॉलिडे कहाँ पर थी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पिक्चर आ जाती है, राइट? आपको वहां पे ट्रैवल नहीं करना पड़ता. सिमिलरली बुल्ला क्या करेगा? मेरा जो कैट है, मैं पूछूंगी बुल्ला तेरा फेवरेट खाना क्या है, वो मेरे दिमाग में मुझे इमेजेस दिखा सकता है, कलर्स दिखा सकता है, शेप्स एंड साइजेस. सो बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट योर माइंड कैन इमेजिन, एन एनिमल कैन शो यू दिस. तो अगर अभी जो हमने छोटी सी क्लिपिंग देखी जहां पर एना ने बोला कि उसने एक विजुअल देखा जहां पर एक छोटे से 2 टाइगर या लेपर्ड cubs हैं. So what Diablo, whose name is Spirit now, what Spirit was doing was he was showing those images. That's how Anna knew. Coming to what we can hear and auditory. So जैसे हम अपने मन में अपनी आवाज कैसे सुनते हैं. इंटरेस्टिंग ये चीज है कि एनिमल्स या प्लांट्स की कोई अपनी आवाज नहीं होती, तो उनके साथ जो हम बात करते हैं हमें अपनी ही आवाज में सुनाई देता है. And of course, with practice, you learn to differentiate what is your answers and what is their answers. But anything and everything that your mind can hear, it can be a full conversation, it can be just keywords as well. Third is feeling. We are able to feel what they are feeling. तो अगर मान लो कोई एनिमल बहुत खुश है, अगर एनिमल कोई बहुत सैड है, अगर एनिमल कोई पेन में है, तो हमको वो हमारी बॉडी के अंदर फील होती है ये चीज. एंड फीलिंग इज समथिंग अगेन वी एक्सपीरियंस एवरी डे. जैसा मैंने बोला था कि हम कुछ लोगों से मिलके खुश होते हैं, कुछ लोगों से मिलके दुखी होते हैं, because this is something that we are feeling inside in our bodies. When we are talking about कि अच्छा अभी हमें टेलीपैथी समझ में आ गई है, हम एनिमल हमसे किन लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे हैं, हमको ये समझ में आ गया, तो आंसर हमको कैसे कैच करना है? सिंपल चीज है कि जब भी आप किसी पेड़ से और एनिमल से जब आप बात करोगे, आपने मान लो उनसे क्वेश्चन पूछा. अब इस वक्त लेट्स से हम एक पेड़ का एग्जांपल देते हैं और हम सबको पता है कि जब हम पेड़ को हग करके खड़े होते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है. Maybe we cannot explain that feeling, but somewhere we know that it's a living being and you are able to feel that warmth within you. So what you can do is, everybody who have pets, maybe आप हो सकता है कि आप कुछ स्ट्रीट डॉग्स का, स्ट्रीट एनिमल्स का ध्यान रखते हो, या आपके घर में पेड़ पौधे हैं, उनसे कोई भी आप एक सवाल पूछो. जैसे ही आपने सवाल पूछा, लेट्स से कि आपने पूछा कि अच्छा अभी फॉर एग्जांपल मान लो मेरी कैट का एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने बुल्ला से पूछा कि बुल्ला तो इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है मेरे घर पे? तो क्या होगा कि अगेन बुल्ला क्या कर सकता है? आपको इमेज दिखा सकता है, आपको वर्ड सुनाई दे सकता है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, या आपको फील हो सकता है. तो what you have to do is you have to go with the first feeling, the first instinct. So the first picture that you see, the first word or a sentence that you hear, and the first feeling. Again, it is called intuition or gut feeling. जहां आपने मतलब गेसिंग वर्क चालू किया, वहां पर गड़बड़ होने लगती. तो जैसे ही मैंने बुल्ला से पूछा कि बुल्ला तू कहाँ पर बैठा हुआ है, इमीडिएटली हो सकता है मेरे दिमाग में एक सीन है कि बुल्ला मेरे घर के ब्लू कलर के सोफे में कॉर्नर में बैठा हुआ है. So the way all the communicators and all of us actually consciously or unconsciously communicating with our intuitions, gut feelings or animals is catching our first feeling with them. So this is the basic of what an animal communication looks like, what an animal communicator does, and जितना जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ही आपका इम्प्रूवमेंट होता जाता है. Now
before I close this presentation, I'm not saying that everybody has to learn this, but if we understand कि अच्छा इस telepathic communication को जब हमारी अभी क्या हो रहा है कि जब हमारी awareness में आ गई है चीज, तो इससे होगा क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा क्यों सीख रहे हैं हम, क्या होने वाला है इससे? जब हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि हम नेचर से कनेक्ट करते हैं, नेचर हमसे बात करती है, एंड यू नो व्हाट, आप जब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन सीखते हो, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, यू कैन टॉक टू अर्थ, यू कैन टॉक टू, जो हम बात कर रहे थे कि आप पत्थरों से बात कर सकते हो, आप जमीन से बात कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट हियर has electromagnetic fields, and what we're simply doing is connecting with those energies. And with time, with practice, with your how much you trust yourself, you learn to hear these things, you learn, like you start living within alignment of nature. I'm showing you this is my tuxedo cat, Bulla, and just have a look at him. And if you know, अगर हमारे पास समय है, only then we can do this exercise, otherwise we can completely skip it. So the main idea of talking about or letting you know how all of us, the telepathic communicators, are communicating with these animals and plants is simply through this. तो जो हमारा जो नोशन है that oh no we have to sit again and meditate, और इसके लिए हमें बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम इन सब से बात कर पाएंगे. नो, this is something that we experience every day, every moment, and your first telepathic communication starts from your mother's womb itself. Again, this is something very natural to us. So this is the basic of what telepathic communication is and how all of us communicate. What I would request everyone and each one of you is, you can, let's just do this one exercise, ठीक है? अगर आपके पास अपने pets हैं, go and speak to your pets और उनसे question पूछ के देखो. और अगर आपके पास pets नहीं हैं, अगर आपके घर के आसपास पेड़ है, go and just hug that tree and आप अपनी प्रॉब्लम उस पेड़ के साथ शेयर करके देखो एंड सी व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड. एक बार के लिए जजमेंट आप साइड में रख लो, बिकॉज देयर इज नोबडी हियर टू जज यू. आप और पेड़ के बीच की बात है, आपको ये चीज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन. मतलब लोग मेरा अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मेरी दोस्त मेरी टांग खींचते हैं, बट द रियलिटी इज this: we all are telepathic communicators and we all are communicating with nature every day. And the whole new world opens up when you start communicating with all the beings out here. And the last thing is, I think कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वैसे भी शायद सीखना जरूरी है. I wish अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको किसी फॉर्म में इंक्लूड कर सकें, बिकॉज देन इट विल, जिस तरीके की दुनिया में हम जी रहे हैं, what is going on, what is happening around here, we will start developing empathy and compassion towards ourselves, towards nature, animals, and also human beings. So we will live in a much better world when we are living with nature. Thank you so much, everyone. I am so glad that I got to share what I experience every day. And if any one of you has any questions, please let me know. I'll be more than happy to answer. Thank you so much, Kia. I think if there is any question you may ask her, you can telepathically communicate with her. But here you इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. I'm telling you, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इंसान से बात कर सकते हैं. I'm like, नहीं, इंसान बहुत मुश्किल है इंसानों से बात करना. I think I want to share experience. My dog was not eating, so I tried to communicate with him that please eat, otherwise you'll be weak. And that after a seconds only, he finished the entire food. See, कितना easy है, और हम कितना naturally कर ही रहे हैं already, नहीं? So if there are no questions, and thank you so much, Kia, for sparing your precious time to be with us, to share something very unique which we never hear anywhere else than we heard from you. It was a great experience to be with you, and thank you so much for sparing time for Swayam Siddha. Thank you so much. The pleasure is all mine. Thanks to you, Pradeep sir, कि आप मुझसे मिले, आपने मुझसे आके बात की. एंड मतलब मुझे अभी भी इतना अच्छा लग रहा है कि जब मैं लोगों को बता रही थी, आपको पता है मैं लखनऊ गई थी फिल्म फेस्टिवल के लिए,
एंड आई एंडेड अप मीटिंग प्रदीप सर, एंड प्रदीप सर ने फिर शिखा मैम से कनेक्ट किया और हमने जब बात की भी, आई थिंक हम इतने ज्यादा सब जब अलाइनमेंट और नेचर की बात कर रहे हैं और यूनिवर्स की जब बात करते हैं ना, यूनिवर्स का अपना एक तरीका है आपके साथ जो सही लोग हैं। जैसे एक सेइंग है, हाउ यू वाइब इज हाउ यू अट्रैक्ट योर ट्राइब। I think we all have attracted each other to learn and share our experiences. And I'm really, really glad that आपने मुझे ये opportunity दी, ये platform दिया. And I hope to stay in touch with you, and like maybe we can think and collaborate and develop this kindness and compassion in this world. Thank you so much. Thank you so much. अभी हमने किया बासवानी जी को सुना, और मैं एक नेचर की स्टोरी आपको और बताऊंगा उसके पहले कि मैं इनवाइट करूं सिंह साहब को। आपने देखा होगा आजकल हमारों के घरों में जो बाथरूम होते हैं वो टाइल्स लगे हुए होते हैं। कई बार कैसा होता है कि हमारे दादा दादी नाना नानी जी बहुत उम्र वाले होते हैं, 85-90 साल के, और वो फिसल के गिर जाते हैं और हिप बोन फ्रैक्चर हो जाती है। ऑपरेशन हो नहीं सकता इस एज में, और कई बार क्रॉनिक इन्फेक्शन से उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। अब इसका नेचर में आंसर कैसे मिला? आई मेट ए पर्सन इन चाइना, एक चाइनीज साइंटिस्ट था जो अमेजोन के जंगल में ब्राजील गया था, और वहां वो घूम रहा था। उसने वॉच किया कि एक छोटा सा मेढक जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, जो आपकी हथेली पे भी आ जाएगा, वो ट्री फ्रॉग जंप नहीं करता है लखनऊ की मेढक की तरह, बल्कि वो चलता है ऐसे ऐसे, जैसे हम चलते हैं ऐसे वॉक करता है। तो उन्होंने वॉच किया कि ये तो यहाँ पानी बरस रहा है, स्लाइमी सरफेस है, स्लिपरी है, तो इसको गिर जाना चाहिए एक आध बार। लेकिन उसने वॉच किया, वो 1 महीने वहां रहा, एक भी मेढक नीचे नहीं गिरा। तो उसको हुआ कि ये कैसे इतनी बढ़िया ग्रिप है, और जब स्टडी किया तो पता लगा कि उस मेढक के लिम्स में एक हाथ की जगह, मतलब एक लिम्ब की जगह 28,000 लिम्स बने हुए थे। यूनिक स्ट्रक्चर था। और अगर आप सोचो एक किसी चीज को आप एक हाथ से पकड़ते हो और या 28,000 हाथ से पकड़ लो तो कितनी मजबूत पकड़ होगी। और उससे सीख के उसने ऐसे जूते चप्पल सैंडल बना दिए जो चाइना में लॉन्च भी हो गए, जिनको पहन के जब आप चलेंगे किसी सरफेस पे तो कितनी भी स्लिपरी हो आप नहीं गिरेंगे। तो आपने देखा नेचर का एक छोटा सा मेढक जो हमारी हथेली पे आ जाता है, जो बीटेक एमटेक पीएचडी कुछ नहीं है, लेकिन वो कितना बड़ा काम कर लेता है। और एक और उदाहरण बताऊंगा मधुमक्खियों का। अक्सर हम आपको किसी मधुमक्खी ने काटा होगा तो बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि मधुमक्खी एक विलक्षण प्राणी है। उसका जो आंखें हैं वो 300 डिग्री देख सकती हैं। हमारी आंखें तो 180 डिग्री भी नहीं देख पाती हैं चारों तरफ। तो अभी निसान कंपनी जो कार बनाती है जापान की, उसने एक ऐसी कार बनाई है जिसमें जो रियर व्यू मिरर है, जिसपे आप देखते हैं पीछे कौन आ रहा है, उसमें वही मिरर लगा है जो मधुमक्खी की आंख से इंस्पायर्ड है। यानी आप 300 डिग्री तक देख सकते हैं कि कौन आपकी कार को हिट कर रहा है दाएं से बाएं से, और आप अपनी कार को बचा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने देखा होगा सिम्फोनी कंपनी के अगर आप वाटर कूलर लीजिए तो उनके पीछे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, जो पानी उससे फिल्टर होके आता है। कूलर बड़ा एफिशिएंट काम करता है। चाइना में बहुत सारी एयर कंडीशन बिल्डिंग हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है, जो बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अंत में एक बात बताऊंगा आपको कि मधुमक्खियां जब शहद लेके आती है छत्ते पे तो सैकड़ों हजारों मधुमक्खियां होती है, लेकिन उनमें कभी लड़ाई नहीं होती। देयर इज अ वेरी सिस्टमेटिक प्लानिंग कि कौन मधुमक्खी पहले अपना नेक्टर जो है वो छत्ते में डालेगी। तो ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने पूरा ये स्टडी करके उन्होंने हवाई जहाज जो एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उनका पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट मधुमक्खियों से सीख के बना दिया। और अब ट्रैफिक जाम की हालत एयरपोर्ट्स पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होने लगी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसर्च जो उस व्यक्ति ने सीखी मधुमक्खियों से। तो आप देखो ऐसे हजारों उदाहरण हैं प्रकृति में, नेचर में, जहां पर हम वाकई बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि नेचर ने क्या क्या हमारे लिए बनाया है। लेकिन आजकल अफसोस क्या है कि हमारे पास मोबाइल के सिवा टाइम ही नहीं है। हम जो कुछ वॉच करते हैं नेचर को नहीं देखते, मोबाइल को ही देखते रहते हैं। तो मैं अब अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा, जब वाटरमैन एंड ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, और उनके लिए मैं कहना चाहूंगा डेडिकेटेड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ग्रास रूट आइडियाज जो उनके हैं। और जो अभी मोहन सिंह जो है उन्होंने एक एनजीओ बनाया था हरितिका इन 1994, और इनका मिशन था पानी की कमी को, खासकर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में उसकी कमी को कैसे दूर किया जाए। करीब 2500 विलेजेस में, 2500 विलेजेस में हरितिका काम करती है।
और उसने अब तक करीब 20 लाख लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है वो ये है कि कोका कोला इंडिया फाउंडेशन, इक्रिसैट और लोकल कम्युनिटीज और परसाई सिंध वाटरशेड 8 चेक डैम्स आपने बनाए हैं और करीब 1,25,000 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर किया है, और जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो 2 से 4 मीटर ऊपर आ गया है। और काफी काम आपका मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अभी मोहन सिंह जी को, जो हमारे वाटरमैन और ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं सेंट्रल इंडिया के। आपका स्वागत है सर, और आपसे हम सीखना चाहेंगे कि क्या हम भी कुछ कर सकते हैं जितना महान काम आपने वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में किया है मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड। धन्यवाद सर, प्रदीप सर और शिखा मैडम, आपने मुझे यहाँ वक्ता के रूप में चांस दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि पानी के प्रति मेरी सोच कैसे बदली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे और हर 3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता था। और मैं आसाम में तिनसुकिया ज़िले में मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। और उसकी याद तो मुझे बहुत नहीं है, लेकिन कक्षा 2 से 6 तक मैं बलिया में मेरे गांव में रहा हूँ मैं। और वहाँ मैंने देखा कि जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है उसका पानी कितना साफ था। मतलब आप मछलियों को तैरते हुए भी, ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ 1975 की, मछलियों को आप देख सकते थे, इतना साफ पानी था और ऊपर से नीचे तक साफ दिखाई पड़ता था। ऐसे ही फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र हैदराबाद दिल्ली में हुआ। मैं जो छतरपुर मंदिर है वो हमारे घर IIT हॉस्टल उसके पास में रहता था। और वहाँ से फिर हम लोग का ट्रांसफ़र हैदराबाद हुआ। और मैंने देखा कि बहुत सारे जो महाराष्ट्र के ज़िले हैं, जो तेलंगाना के ज़िले हैं, जो पहले तो आंध्र प्रदेश था, काफ़ी सूखे हुए ड्रॉट प्रोन जोन था। और जैसे जैसे मेरी पढ़ाई बढ़ी तो पोस्ट ग्रेजुएशन MSc जूलॉजी में करने के बाद मैंने एक इन्वायरमेंट एजुकेशन में सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद से मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग करी जो 1 साल का था। और उसमें मैंने कच्छ और पूरे गुजरात को देखा। और वहाँ से मुझे समझ में आया कि हम अलग क्या कर सकते हैं। तो कुछ दिनों मैंने सिप्ला फार्मास्यूटिकल में भी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग काम किया 94 में ही, लेकिन वो मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। और मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई 94 में। एक गांव से मैंने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम स्टार्ट की। और यहाँ के जितने भी वैसे तो हम लोग 4 राज्यों में काम करते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, आपका धार, बड़वानी, बैतूल, आप पानी तो बहुत होता है लेकिन सब पानी बह के चला जाता है। और अधिकांशतः जो छतरपुर में कंसंट्रेशन अप्रोच में हम लोगों ने काम किया, और ये देखने में आया है कि गर्मियों के समय में यहाँ पे जो जियोलॉजी है वो सॉफ्ट रॉक है और सेल रॉक फॉर्मेशन है, ग्रेनाइट है और लाइमस्टोन है। जहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, सैंडस्टोन है और सेल रॉक फॉर्मेशन है, वहाँ पे आप कितना भी ड्रिलिंग करेंगे आपको बिल्कुल ही ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ पे फ्रैक्चर्ड होते हैं वहाँ तो मिल सकता है। तो ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही सिंचाई के लिए पानी है। पहले तो यहाँ पे पूरी तरह से जो उनकी हमारे जो गांव के लोग थे उनकी आजीविका वन आधारित थी कि यहाँ महुआ काफ़ी होता है। आप लोगों ने रियो टिंटो के बारे में सुना होगा, मध्य प्रदेश में ही जहाँ पे हम लोग काम करते हैं लाखों महुआ के पौधे हैं। और यहाँ पे लगभग 350 हेक्टेयर में
बिरला की एक कंपनी को ये दिया गया था काम करने के लिए, लेकिन काफी विरोध हुआ यहाँ पे, और वो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश शासन ने उसको कैंसिल कर दिया। अभी भी आप देखेंगे कि केन बेतवा हमारे यहाँ पे ही हो रहा है, जहाँ पीने का बिल्कुल पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे काफी सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, और जो प्रशासन का जो रवैया है वो गरीब आदिवासियों के प्रति अच्छा नहीं है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए 94 से जो अभी हम लोगों ने काम किया है लगभग 4 राज्यों में, तो वाटर क्वालिटी की भी मुद्दा है, जहाँ चूरू टोंक बांसवाड़ा में जो सैलिनिटी है बहुत अधिक है, लेकिन हम लोगों ने जो इसका हल ढूंढा वो इसमें ऑल्टरनेटिव वाटर सोर्स हम लोगों ने देखे, और वहाँ से 300 गांव में पीने के पानी की योजना जो अभी जल जीवन मिशन में कार्य हो रहा है वो हम लोग 98 से ही कर रहे हैं, और ऑल और नॉन अप्रोच, मतलब जो हम छोटे गांव लेते हैं, जितने भी वर्ल्ड की चैरिटीज हैं उनके साथ हम लोगों ने काम किया और 300 गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराया। ऐसे ही सिंचाई के लिए हम लोगों ने अपना जो इतिहास है वो अगर देखें तो चंदेल कालीन तालाब यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो पन्ना रीजन है, खजुराहो के जो मंदिर हैं, और चंदेल राजाओं ने काफी सारे तालाब बनाए, और वो तालाब सिंपल कॉन्सेप्ट पे ये है कि 2 पहाड़ों को जोड़ दिया गया, और 2 पहाड़ों को जोड़ने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है और दूसरे जो अगर भर गया तालाब तो दूसरे चैनल के होते हुए दूसरे जगह जाता है। तो सीरीज ऑफ तालाब भी चंदेल कालीन तालाब बने हुए थे, और यहाँ लगभग 1200 साल हो गए, और ये तालाब आज भी जीवित हैं। अनुपम मिश्रा की किताब है एक, राजस्थान के थे, कि आज भी खड़े हैं तालाब। तो हम लोगों ने नीति आयोग के साथ इनका रेनोवेशन 200 तालाबों का छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में हम लोगों ने किया, और कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे हमने कंसंट्रेशन अप्रोच से काम किया, कि हमने रिवर बेसिन पे काम किया, कि अगर जैसे उस रिवर बेसिन में हम छतरपुर जिले की बात करें तो एक भड़ार नदी है, और एक बन्ने रिवर बेसिन है, और दूसरा बराना रिवर बेसिन है। बराना रिवर बेसिन ही जो है वो जाती है केन में, और उसी केन नदी के ऊपर अब बांध बना के और उसको बेतवा में डाला जा रहा है। तो इसमें जहाँ से नदी स्टार्ट होती है और दूसरी जगह जाके मिलती है, वहाँ पे हम लोगों ने सीरीज ऑफ डैम्स बनाए, जितने भी तालाब हैं उनका रिनोवेशन किया, नए तालाब बनाए, और इस तरह से 45,000 हेक्टेयर जमीन को हम लोगों ने, जहाँ पे बिल्कुल एक भी खेती नहीं होती थी, आज कहीं कहीं 3 फसलें हो रही हैं और कहीं कहीं पे 2 फसलें लगातार होने लगी हैं, और उन सबके आजीविका में लगभग जो पहले उत्पादन नहीं होता था, आज लगभग 4 से 5 गुना का उत्पादन में अंतर आया है। इसके साथ साथ पानी को बताने के लिए जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट है वो भी हम लोगों ने किया है, और जिसमें अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख पौधे हम लोगों ने लगाए हैं 7,000 हेक्टेयर पे, और उसमें छतरपुर जिले के जो रेवेन्यू लैंड पे हैं उन पे एक बांदकपुर जगह है, फेमस टेम्पल है वहाँ पे, वहाँ एक ही जगह हम लोगों ने 1,20,000 पौधे हम लोगों ने वहाँ लगाए हैं उसका। और आगे चल के कैसे जो आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है और दूसरे हैं, कैसे इसका हम वैल्यू चेन कर सकते हैं, तो हम वैल्यू चेन पे भी आगे काम करने वाले हैं। साथ में पानी उपलब्ध कराने के बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे काम किया, कि बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स हम लोग लेके आए, ताकि जो यहाँ के आदिवासी किसान हैं वो बीज नहीं बोते हैं, अनाज बोते हैं। अनाज बोने की वजह से उनका जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि गेहूं उनका 1 एकड़ में 4 से 6 कुंटल तक होता था, और हम लोगों ने जो दूसरी ICR की जो वैरायटीज हैं उसको हम लोगों ने उपलब्ध कराया, और उसका उत्पादन 22 कुंटल प्रति एकड़ हुआ। ऐसे ही ग्राउंडनट की वैरायटी हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस हम लोगों ने किया,
उसने पूरी लोकल वैरायटी को, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर एग्रीकल्चर विंग है, वहां से हम लोग टीबीजी 41 और ट्राम्बे अकोला ग्राउंडनट 37A 2 वैरायटी लेके आए थे। और जो लोकल वैरायटी का उत्पादन 4 से 6 कुंटल होता था, वो बढ़ के 18 कुंटल हुआ और 3 बार इसका उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू किसानों को कैसे पानी उपलब्ध हो सके, तो उसके लिए हम लोगों ने विलेज डेवलपमेंट कमेटीज बनाई और एक हाई पॉइंट पे पानी को छोड़ दिया ताकि किसानों को पानी समय पे उपलब्ध हो सके। तो ये पिछले 31 वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और आगे भी ये अनवरत यात्रा जारी रहेगी। और आपके अगर कोई सवाल हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप सिंह साहब से पूछ सकते हैं, या उनके साथ आप काम करके अपने क्षेत्र को भी हरा भरा बना सकते हैं। और ग्रीन मैन इनको कहा क्यों जाता है आखिर? जो हरितिका प्रोग्राम है उसने आपने जो है बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, लाखों की संख्या में 50 लाख पेड़ लगाए हैं, और कई लोगों का आपको सपोर्ट भी मिला है इसमें। अकेले इतने अरेंज करना भी मुश्किल है, लेकिन सपोर्ट लोग तभी करते हैं जब आप में कुछ दम हो, आप में कुछ करने की हिम्मत हो, आप में साहस हो कि आप आगे बढ़ें और समाज को एक रास्ता दिखा सकें। तो वो एक काम आपने किया है। और जो सबसे बड़ी बात है, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून। तो बगैर पानी के तो कुछ भी नहीं है। तो जो आपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे जो पानी की वजह से जो फ्रूट ऑर्चर्ड्स लगाए गए, तो उनसे हजारों लोगों को रोजी रोजगार भी मिला। और आपने पानी की वजह से वहां पर वो फलों का उत्पादन शुरू हो गया जो पहले वहां नहीं होता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो हम आपके बहुत आभारी हैं स्वयं सिद्धा की ओर से कि आपने इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय हम दिया। लोग बहुत इंस्पायर हुए आपकी पूरी कहानी सुन के, जो आपने अचीवमेंट्स किए हैं। 50 लाख पेड़ लगाना इज नॉट ए जोक, आसान नहीं है। और एक आदमी का इनिशिएटिव जब आप चलते हैं तो पीछे आपके फिर दुनिया आती है। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो आपने पूरी आपकी यात्रा बताई, बलिया से लेके कहाँ तक आप पहुंचे, कहाँ कहाँ आप काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। और शायद हम लोगों की शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही अच्छा करते रहें, हमारे देश को एक हरा भरा। और पानी की कमी जो बुंदेलखंड रीजन है, अगर आप वहां जाएं तब आप समझ पाएंगे कि पानी की कमी क्या होती है, वो तबाही क्या होती है। और वहां पर जो ये काम करना, जो क्षेत्र आप गिना रहे थे बुंदेलखंड रीजन के, टीकमगढ़ और छतरपुर या आसपास की, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की कमी है। तो आपने जो काम किया है सर, आपको बहुत बहुत लाखों बधाई स्वयं सिद्धा की ओर से। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें कि वो लोग भी आपकी तरह अगर बन जाएं तो हमारा देश बहुत बड़ा एक चेंज ले आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना समय देने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शिखा मैडम का। आपका दिन शुभ। शिखा जी, और हम अब ओवर टू डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। अब वो बताएंगे जो पूरा एक कंपटीशन हुआ था, वो उसमें क्या हुआ था, कितनी एंट्रीज आई थी, किनको पुरस्कार मिले। और आपने मेमेंटो के बारे में तो सुना ही है कि कितने अनोखे मेमेंटो दिए जा रहे हैं, जो आज तक मुझे नहीं लगता, मैंने करीब 2000 लेक्चर लगभग दिए हैं, मुझे आज तक एक ऐसा मेमेंटो नहीं मिला है जो ये बच्चे पाने जा रहे हैं। तो आप बहुत लकी हैं बच्चों कि आपको इतना प्रीशियस मेमेंटो मिल रहा है। यानी वो चीज जो लाखों करोड़ों साल पहले हमारी धरती पे थी, वो आपके अब ड्राइंग रूम में आ जाएगी जब आप ये पुरस्कार जीतोगे और आप इस तरह की एक्टिविटीज में भाग लगो। यही हमारी खासियत है स्वयं सिद्धा की, कि हर बार हम कुछ ना कुछ ऐसा नया कर जाते हैं जिसमें शायद शिखा त्रिपाठी जी के पिताजी का भी आशीर्वाद है, ऊपर वाले ईश्वर का भी आशीर्वाद है, कि हर बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो एक यादगार बन जाता है। और इस बार भी वही हुआ। ऐसी तो उम्मीद भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, जबकि मैं शुरू से कई महीनों से शिखा जी के साथ इन्वॉल्व था पूरे प्रोग्राम मैनेजमेंट में। क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे, कितने बच्चे होंगे, क्या होगा। लेकिन ये एक सरप्राइज मेरे लिए भी था, द काइंड ऑफ मेमेंटो वी आर ऑफरिंग टू द स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच शिखा जी, गिविंग मी अ चांस टू टॉक टू द पीपल। मैंने छोटी छोटी बातें बताई, थोड़ा सा चल नहीं पा रहा था पावर पॉइंट, नहीं तो मैं आपको दिखाता और बढ़िया चीजें। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मेरी सबको बच्चों को शुभकामनाएं।
आप जीते हैं, और अगर नहीं भी जीते हैं तो अगली बार आप विनर होंगे पक्का। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि आप तो अभी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि आपके जो साइन टून्स हैं वो मैं जितनी बार आप दिखा रहे हैं, मैं लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देख रही हूँ, तो वो इतने एनर्जी गिवर है, मतलब इससे बड़ी टॉनिक कोई हो नहीं सकती। तो आप हैं हमारे साथ अभी जब तक मैं अनाउंस करती हूँ, और एक एक साइन टून रखिएगा, जब खत्म हो जाएगा उसके पहले एक आपको आपको आपका साइन टून से ही हम इसका कंक्लूजन करेंगे, तो आप उसको एक एक कोई साइन टून अपने पास रखिएगा। तो अब जैसे कि हम लोगों ने बात की और जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, बेहद प्रेशियस इस बार कंट्रीब्यूशन जो एक बहुत ही बड़ी संस्था है, बीएसआईपी बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, जो इकलौता है पूरी कंट्री में, लखनऊ में है। उनका एक बेहतरीन म्यूजियम है, और जो भी कोई लखनऊ में है या लखनऊ आए तो उस म्यूजियम को जरूर जरूर विजिट करें। और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने वैसे ही आपको इनवाइट दिया हुआ है, तो उनका ये कंट्रीब्यूशन है। प्लस ये आया कहाँ से आपको बताया, रितेश ने बताया, वो तो सीधे अपने म्यूजियम से ये फॉसिल उन्होंने भेजा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको इतनी मेहनत से मेमेंटो फॉर्म में जो लाने का काम किया है माइंड शेयर, उनके ऑगस्टीन उसके प्रेसिडेंट है और जुल्फी उनके कलीग हैं। तो जुल्फी सैयद ने इसको बहुत मेहनत से मोमेंटो फॉर्म में ला करके इसको उस फॉर्म में दिया है। चलिए अभी बात करते हैं कि 164 एंट्रीज पूरे भारत वर्ष से थी, 11 स्कूलों ने भाग लिया था, और कॉन्टेस्ट ये था कि बच्चों को 9, 10, 11, 12 के बच्चे से भाग ले सकते थे, और उन्हें बच्चों को कोई 3 दिन नेचर के किसी एलिमेंट के साथ कम से कम कुछ टाइम बिताना था, लगातार 3 दिन। वो चाहे बादल हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आसमान हो, और उससे वो क्या, उससे वार्तालाप करना था। तो वो क्या सीखा, ये उनको 150 शब्दों में लिखना था, और एक फोटो भी अपनी वार्तालाप करते हुए भेजनी थी। इतनी जबरदस्त बेहतरीन हमारे पास एंट्रीज उसकी आई हैं, जिसके बारे में जो जूरी मेंबर है वो बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं, पहली बार हम यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप के सजेशन के मुताबिक चिल्ड्रन फोरम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो 11 स्कूल के बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक करके वो ब्रीफ में मतलब 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर में अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उनको कैसा लगा और क्या उनको महसूस हुआ ये। तो कौन सबसे पहले का, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, वन आफ्टर अनदर वी विल लिसन। तो आन्या, आप बोलना चाहती है? आन्या अनम्यूट कर लीजिए अगर बोलना चाहती है तो। आन्या अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट, आन्या अनम्यूट करिए। वो जो इस ये आइकन बना है ना, देखिए स्पीकर वाला आइकन है, उस पर क्लिक करिए। आप, अभी ये हुआ नहीं है, आप तब तक किसी से मदद ले लीजिए जो आपको अनम्यूट कर ले। और तब तक मैं, कोई और बच्चा बोलना चाहता है? हर स्कूल से एक बच्चा तैयार था बोलने के लिए। कौन बोल रहा है? Yes, ma'am. हाँ, I would like to speak. या ग्रेसी, हाँ। Good morning to all the dignitaries, participants, and teachers. I am Gracie Singh from City Montessori School, Rajajipuram, Campus 1. When you see a mosquito in your surrounding, you will think, what purpose does it serve? But in our ecosystem, in our planet, every little organism has its own purpose. While in those 3 days of experience, I realized a lot of stuff. Firstly, that every little organism contributes equally as much as we do. So we humans need to be as empathetic to other humans as well as those tiny creatures who live around us. Secondly, also I saw how resilient those tiny creatures are against this whole massive world. Like those tiny creatures and those tiny plants, like wild mushrooms and all, they grow. They are so tiny, but they stay humble and they grow, stay resilient, and never give up. So I think it's a lesson to us that we should never give up in our life and we should focus on our goal to achieve it. Lastly, there is one thing I would like to address to everyone present here. It's that we are the ones who hold the power to bring any kind of change. We are the youth of the world, and we are the ones who can bring change and
for the betterment of our world. So, and we are the ones who can provide Mother Earth with the help it needs from us. That is it from my side. Thank you, everyone. Wonderful, Gracie. You have given such a wonderful, message to all of us as to what you learned, and it was so beautifully articulated. Great. Thank you, Gracie. So who comes next? Next, Samriddhi from MR Jaipuria would like to speak. You unmute Yes, yourself first. Yeah. yes, ma'am. Vande Mataram, everyone. I am Samriddhi Dikshit from State MR Japuria School, Vineet Khan. And during the listen to nature activity, I sat down quietly and I noticed after a few moments, I felt very peaceful. I felt very calm, as if the nature was speaking to me, but without using any words. I noticed two plants beside each other, and one was blossoming, it was blooming with flowers, and it looked very beautiful. Whereas the other plant, it was not blooming, it was rather shedding its leaves, and it made me realize how everyone has their own season to grow, their own cycle according to which they work, and I don't need to compare myself to others. I just need to trust my own journey. And then another thing that I observed was that there was a bee that was moving from one flower to another flower, and the flower did not seem to mind it. It was rather as if it was enjoying it, it was happy, it was smiling at the bee, and it was giving them the nectar that they wanted. And the flower just they waited for, to get pollinated. And then there were such tiny worms in the soil, and they seemed to aerate the soil, helping out the plant to keep the soil healthy. And this made me realize the importance of collaboration, the importance of harmony in nature, and made me realize that in everyday's rush of the life, we perhaps forget to notice these small things that make the world around us so beautiful. The harmony, the synchronization, the collaboration, where we all depend on each other and we all create a beautiful world where everyone has their own place and everyone is moving at their own paces. So that was one thing that I learned from nature, and I'm grateful, I'm very grateful to the nature for teaching me that. Thank you. Thank you so much, Samriddhi. I mean, the nuances that you got through your observation are something worth listening to. And probably all of us need to really understand and do it, the way you did it. And we'll learn so much the way you did, Thank you. So Satvik is here from CMS Gomti Nagar. Satvik would like to just unmute and say what you want to. Am I audible? Yes, you are. So I will begin. Dear Earth Protectors, in those 3 days, I tried to avoid cliche poetic themes, thus leading to my two observations of nature, which I can also call as puzzles. I observed on the second day, with the failure on the first day, that a flag undulating, a ripple in a pond, a bird flapping its wings, all mimic the geometry of a sine wave, like this, or an oscillation, though in different orientations. It put me in confusion to see so much similarity in the world with so much diversity. But on the third day, I realized that this might be comparably a better way to transfer energy, where oscillation provides much lesser resistance on transferring energy than transferring in a straight line. My second observation was that my mind, which is made of nature, a form of nature, was able to observe itself. It is a very big puzzle. How can a thing observe itself? But then I looked at a reflection in a pond, and it made me realize that maybe we are not reacting to nature. Maybe we are reacting to a model, a simplified model of nature that we have made in our mind. Thank you. Thank you, Satvik. And then your introspection was something very marvelous. The way you were so deeply trying to understand the nature when you were talking to it. Great, Satvik. Avinash is ready. So Avinash is from Raja Mahendra International School, Rajamundry. Avinash, can you unmute yourself and speak? Andhra Pradesh, yeah. Yes, ma'am. Very good afternoon. Myself, Avinash Reddy, a class 12 student from Raj Mahendra International School. Actually, the topic, what I've observed is how often do we actually notice nature instead of simply looking at it? That was the question I carried with me for all the 3 days.
that I observed. Starting with the leaf. Okay, I watched a leaf falling from a tree. Normally, I would have walked past it without having a second thought. But this time I stopped and wondered, was that really the end of the leaf? No, that was not. After thinking a lot, it would return to the soil, become part of it, and eventually help supporting a new life. Then I noticed a bee moving from flower to flower. Actually, normally it looks ordinary, but what looked like ordinary, the movement was very actually connecting plants through pollination. Like the connection between the flowers, everything pollination was being occurred by the bees. Normally, it looks ordinary if we won't observe keenly. And then there was an ant, tiny enough to be ignored, yet still playing its own role in much larger system. So, a leaf, a bee, an ant. Three ordinary things, but together they change the way I understood nature. I realized that nature doesn't announce its most important work. Much of it is happening quietly right in front of us while we are too busy to notice it. So, I just learned more about nature. I mean, like, I also learned about how to look at, how to look at it in a different way also. These 3 days ago, I saw a leaf, a bee, and an ant. Today, I'm seeing something different. Like, I see a cycle, I see a connection, and I see a system in which even the smallest life matters. And once you start learn to look differently, you begin to see that nature has been connected all along. We were just so busy, like simply too busy to notice. And that's all I observed. आज Thank you, वो Lord, for शिखा giving me मैडम this का opportunity. पापा का वो प्रोग्राम करती है ना, वो है। Yeah. हाँ, वो देखा। That's all from my side, ma'am. Thank you a lot. Yeah, thank you आवाज नहीं आ रहा so much, Avinash. In fact, it's actually spirit of life that how ending becomes the beginning. But then we talk about it, but we never realize the way you did, and that was a fantastic kind of observation. So, who's going to speak next? I can see so many hands. So, just unmute yourself immediately so that we know who's going to speak and introduce yourself. Who's there? Prakhar would like to speak. So somebody's, yeah. Good afternoon, everyone. Yeah. Good afternoon, everyone present here. My Yeah. name is Aradhya Dikshit. I am a student of class 11 from Pioneer Montessori Inter College, LTCO, Lucknow. Today, I feel very grateful and truly honorable to be the part of this organization to present my views on this, because I really love to be sit on in the nature and observing it. I actually find this one a very good quotation also. This is not our this is the opportunity to taught me the protecting our environment is not our responsibility, is also our duty to give something to our upcoming generation. We have to give something to our generation, upcoming generation, that they can also say that our ancestors or our the previous generation gifted me something. So today I will like to explain and express my views and my experience on this topic. Actually, I don't have this much things to be say, but I would like to express something that I have went to my nearby park to view something, some special environment to feel something, and I have seen so many things, greenery, a very big banyan tree. I seen some birds also, and I see some one mother, mother bird feeding my child in a nest. On first day, it was very distracted for me, because you all know and we also know that we are the youth. We cannot sit without internet or phones, so it was quite distracted for me to sit for long without phones and anything. Then I think to go back, and then I again came back on the next day. I start seeing everything in a different way and in a different manner. I seem everything very nicely and expressed to everything. I also seen one thing that after some time it was start raining, so I see a peacock also. How beautiful the peacock was! I was still remembering it, and I was feeling goosebumps that how beautiful it was. Then I came back again because it was time to study also. So I came back on the third day. It was last day for the experiment. So I went back to there and I sat closely and everything beautifully manner.
somewhere in my mind was there to not to go back from this environment and stay here because I loved the environment so much. I'm at the end, I would like to say that this opportunity and this project changed my view to see the environment things in a very different way. Thank you so much. Thank you, Aradhya. And the way you observe, we keep going to different places. We enjoy, but we never observe the way you did. Thank you so much, Aradhya. And who's going to speak next? Prakhar wants, I can see that. Prakhar, can you just unmute? Yeah. Thank you, ma'am. Ma'am, I'm Prakhar from City Montessori, Managar. Am I audible? Yes, you are. Dear nature protectors, when I joined the Listen to Nature project, I was asked to sit quietly for 3 days and truly observe my surroundings. Honestly, at first, I didn't understand its importance. Recently, I visited relatives in Mandla, a small town in Madhya Pradesh. Standing under a brilliant night sky full of stars, I realized how much we lose in big cities like Lucknow, where pollution hides all that beauty. Returning home, I remembered how my colony used to be filled with massive trees and morning bird songs until these trees were cut down and the music vanished overnight. But walking around for this project, I noticed how mango and jamun saplings started to grow outside our gates. Nature taught me that even when big cities destroy green spaces, life always finds a way to rebuild. I'm so grateful for this experience and I'm determined to help bring that life back to our streets. I'm so grateful to Swam Siddha for giving us this wonderful opportunity to pause, listen, and reconnect with our planet. It inspired me to help bring that green life back to our streets. Thank you, ma'am. Thank you so much, Prakhar, for explaining as to what did you observe, and it was beautifully expressed. Thank you so much. So, Sheetal from Navsrijan School of Conscious Transformation, can you unmute yourself, please? Yeah. Vande Mataram, ma'am. I'm Vande Sheetal Mataram. Katyal of grade 9 Navsrijan. Participating in Swayam Sudha was special because it was connected with nature. I really enjoyed sitting quietly in nature and observing it. When we think of nature, we usually picture the sky, trees, flowers. But during my nature walk, something much smaller caught my attention. A little rock lying quietly on the ground. I chose it because its stillness made me realize that even something so ordinary can teach us about patience, strength, and remaining calm during difficult times. This experience taught me to observe deeply and value the small things in nature that we often take for granted. And that is all I observed. Thank you, ma'am. Thank you, Sheetal. In fact, somebody who will never even see that rock which was lying somewhere in the dirt, you not only saw, you saw it the way it was, the way it can become. It was actually mesmerizing to, hear you and also read the way you have written, Sheetal. Thank you so much. Pranita from Sri Gautami Smart School. Pranita, would you unmute? Pranita, are you there? If Pranita is not ready, Amrita is there. Amrita, can you unmute? Pranita, you have unmuted yourself. And yeah, you can speak. Yeah. Yes, ma'am. Good morning, everyone. My name is K. Pranita Sri. I'm from Sri Gautami Smart School, and I'm here to talk about the topic Listen to Nature and Learn from Nature. Nature is not just something we see around us. It is a teacher that speaks without words. The trees teach us how to stand strong. The rivers teach us how to keep moving. And the seasons teach us that change is natural part of life. But are we listening? Really, tell me, are we listening? No. When we observe the nature, we learn patience, balance, cooperation, and resilience. Every bird, every plant, and every drop of rain has something to teach us. So let us not look at the nature. Let's listen to it, learn from it, and protect it. Because when we learn from nature, we learn how to live better. So I'd like to conclude my speech with listen to nature, learn from nature, and let nature inspire our future. Thank you. Yeah, शिखा thank you, दो Pranita. लाइन दो Yeah, शब्द yeah. मैं भी बोलूंगी बीना, हाँ, बोलिए बीना. हाँ, हाँ कैसी हो मैं ठीक हूँ बीना. अच्छा हाँ. लग रहा है आपने मुझे स्वयं सिद्धा में इनवाइट किया आई एम सो आई मीन क्या कहना चाहिए मुझे इतने सब लोगों के विद्वानों के बातें सुनने को मिली मैं जस्ट अभी जब बॉम्बे से आई हूँ
तो नेचर के बारे में तो हम लोग सारे इतने मतलब ओवरवेल्म रहते हैं, क्योंकि मेरे फादर जो है आबू में जो है ये भील करासिया लोग जो है ना पेड़ काटने के लिए उसके लिए सबके लिए मना करते थे कि नेचर को मत काटो, और उसके लिए बहुत स्ट्रगल करते थे. And he did his BSc Agriculture from Allahabad University, and he was one of the director from Pusa University. तो हम लोग तो उस परिवार से हैं कि जिसमें नेचर ही रहता है. हमारे तो हम तो खुद फार्म हाउस में ही रहते हैं, एंड वी लव टू सी. और ये जो प्रकाश आमटे जो हैं, विकास आमटे जो आमटे सबके बेटे, उन्होंने तो अपने घर में आनंदवन में तो पूरा नेचर ही बना रखा है. खूब सारे वो जो कैट की ईयर अपन ने वो देखी है ना उसकी फिल्म केया की, तो उनके घर में ये लेपर्ड्स वगैरह सब है. छोटे छोटे बच्चे जो है उसको देखते मजा आ जाता है उनका वो तो देख करके. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे मतलब इनवाइट किया. एंड और सबको जो है बहुत बहुत थैंक्स, कम से कम उनको सुनने को तो मिला. मेरी थैंक यू बेटी बीना. तो अभी आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, थोड़े दो बच्चे और आपको बताएंगे. बहुत अच्छा बहुत बोल ही रहे हैं. नहीं, मैं बस ना हाँ. गला खराब हो रहा है तो इसलिए मैंने कहा मैं बोल के अच्छा शांत हो अच्छा, जाऊं. ठीक है ना? ठीक है. थैंक ओके. यू बीना. मेरी या डॉटर आई हुई है, वो पूरी वीगन है, वो सारी ऑर्गेनिक ही, हम लोग घर में ऑर्गेनिक ही खाते हैं पीते हैं बस. very good. Okay. So thank you Bina, and stay tuned if you can afford to. So I'll be very happy. So who speaks next, kids? Who's speaking next? Unmute yourself and speak so that we have Anya. Anya, can you unmute yourself now? Yeah, Anya. Am I Yeah, audible now? yeah, you are. Okay. So, good afternoon to everyone. I am Anya Yadav from City Montessori School, Rajajipuram Campus 1, and I'm extremely honored to be a part of this contest and sitting here in this meeting with such knowledgeable people, our guests. So basically, if I talk about myself, here being completely honest, I did not know what nature is. I had only seen nature in textbook through diagrams of photosynthesis and all. But now I paid attention. When I stepped onto my terrace and saw the birds chirping and that gentle breeze going through my body, I literally feel pleasured. Now, when we feel dull, to be honest, and I just suggest everyone to go onto the terrace, and the colors in the sky are waiting for you. Now, talking about myself, whenever I thought about nature, the first image that flashed into my mind was some dense forest, beaches. But what the reality is, that nature is not something to look at, it's to experience. Even if you go onto a terrace, garden, or even sit in your balcony watching a rainy day, it can really heal you. You do not need some tickets, fancy trains to experience nature. You just need to climb up your stairs and go onto the terrace to experience it. So I was really very honored to be a part of this, and I really understood what nature means through this contest. Thank you to Swayam Siddha for providing me this opportunity. Anya, you spoke so powerfully that if we tell everybody what you spoke, many kids would leave mobile, which is the biggest menace now, and go to the nature experience the way you did. Thank you so much, Anya. And now moving on to Joshita. Can you unmute yourself, Joshita? Can you unmute yourself? Ma'am? Yeah, Joshita, who's speaking now? Yeah. Manya, yes, Manya from Raja Mahendra International School, Rajam, Sri Andhra Gautam. Pradesh. Yeah. Yeah. Sri Gautami, Good you're from Sri Gautami. Okay, Yeah. Manya, yeah, please, yeah. Good morning, everyone. I'm Varmanyushi from grade 9. So today I'm here to speak about listen from nature and learn lessons from it. Our nature teaches us a very powerful lesson. Karmaniya vad kariste ma phelchu khadchana. You have the right to perform your duty, but not the fruits of your action. Just as tree grows, gives shade, and bears fruit without demanding anything in return, we should focus on doing our duty sincerely rather than worrying constantly about the result. Just as nature teaches us that patience, adaptability, and consistency are important in life,
When we fail, we can learn from the river and keep going. When life becomes difficult, we can learn from trees to stay strong. So next time you walk outside, don't just look at the nature, listen to it. Sometimes its silent lessons are exactly what we need. Thank you. Thank you, Manya and Pranita. Not only you sing so beautifully, which you did today in Ganapati Vandana, but you speak also very beautifully, and you spoke from your heart the way you experienced this contest. Thank you so much, Manya. So who else is speaking? Amrita, are you ready now? Ma'am, Yeah, am I Amrita. audible? Yeah, please. You are audible. You tell your school name, please. Yeah. Good morning, everyone. I am Amrita. I study at GMR Varalakshmi DAV Public School in Rajam, Andhra Pradesh. And my experience with Swayam Siddha has really been interesting and informative. Whenever I think about nature, the first thing that comes to my mind is the sea, beach, and all. There's something about it that has always caught my attention. And this time for my Swayam Siddha program, when I visited when I visited the beach, the same experience, um, the peaceful breeze and the waves, everything. But that very day, I had a nightmare too about the dark side of the sea. And from that, I understood and I realized that we often look at nature, but we don't really observe it. The sea has peaceful vibe as well as a dark side also. And I'm glad to be a part of this program. Thank you so much, Yoshita. Thank you. Uh, the way you explained as to what are the different sides of nature. Nature can be angry also, and we've seen when we do, its patience is enormous, but when we cross all our limit and threshold of its tolerance, then nature shows its fury. So great words by you. Now, who's going to speak next now? Quickly, can I request you to unmute yourself and speak? Yeah, if there is no other kid left, yeah, so we have since CMS Aliganj, who has been participating from 2008 in our programs, and they have always been there. They have exams going on, so it was difficult for the kid to come. So I have requested their mentor, Kailash Keswani ji. So can I request Kailash ji, unmute yourself and maybe within 30 seconds to 1 minute can share as to what kids felt. Sure, ma'am. Am I audible? Yes, you are. Okay. Respected Dr. Shikha Tripathi and ma'am, esteemed dignitaries, teachers, and dear students. It is a privilege to speak on behalf of the students who participated in this unique environment initiative by Swayam Siddha. I sincerely appreciate Dr. Shikha Tripathi ma'am and the entire Swayam Siddha for creating such a meaningful platform for young learners. This initiative has gone beyond the boundaries of a conventional competition by encouraging students to observe, reflect, express, and develop a deeper connection with nature. The greatest learning from this initiative is that students have understood that nature is not merely something to study in textbooks, it is something to experience, respect, protect, and live in harmony with. Through this opportunity, they learn to look at the surroundings with greater sensitivity, appreciate the beauty and value of biodiversity, and understand their own responsibility towards the environment. Such experience also helps children develop creativity, critical thinking, observation skills, confidence, and a sense of responsibility. Most importantly, they inspire young minds to realize that even small individuals' action can contribute to a larger environmental change. On behalf of all the participating students, I extend my sincere gratitude to Dr. Shikha Tripathi ma'am and Swam Siddha for providing the valuable learning and for giving our children an opportunity to become ambassadors of nature and responsible stewards of our planet. Thank you.
Thank you, Kailashi. You have always been our ambassador since 2008. There's not a single time when you missed this event and your students. So thank you very much. Is there any kid who wanted to speak and has been left out? Please unmute yourself immediately. Yes, Joshita. Yeah. Good afternoon, everyone. I'm K. Joshita. For everyone, the peacock may just be our national bird that dances in the rain, but for me, it's colorful. I feel that it teaches us to be confident in our own uniqueness. It's beautiful. Its blue color represents calmness and reminds me to stay peaceful even when life gets difficult. The green color represents tolerance, teaching us to accept and respect others. I have actually seen peacocks in real life at a zoo. I saw never imagined that my visit would end with a peacock giving my finger a little welcome bite. It was definitely an experience more than a beautiful sight. It gave me a memory. It's beautiful. Yeah, Joshita, I think you had a signal problem. Nevertheless, we could hear a little bit of your narration and actually found it very beautiful. The way you experienced peacock, and that a small bite to as a friendly bite. So that was really a fantastic experience. I wish your network was working. We would have heard you completely. I request Fiza to unmute herself and introduce which school she's from. Fiza, are you there? Yeah, Fiza. Good morning, everyone. Good Yeah, afternoon. good afternoon. I am Fiza Ahmed from Nafshajan, grade 10th. For me, I have experienced nature as a companion towards myself because as I am a shy girl, so I never share my feelings to anyone, neither my friends or nor my family members, most probably. So according to me, whenever I sit near nature, whether it's a park or near any place, alone only on terrace, I talk to nature, to the plants, and they give the reply back to me in whatever form I have learned. They always, it makes me feel to sit over there and experience those things which I cannot share it with others. I share all the pain and whatever I am feeling it. I just share it to the nature, and after 10-20 minutes, I just feel relaxed and be active towards the whole day. And that's what I've learned from nature. And the second thing which I've learned, I just see the harmony, how it goes round and round in the nature, how each one is connected uh, peacefully and doing and completing the things powerfully. This is what I've learned from nature. Thank you so much, Swayam Siddha, for giving us so big opportunity to know what actually nature means to us. Thank you, Fiza. Fiza, you're from which school? Nafshajan, grade 10th. Actually, Oxygen School of Conscious Transformation. Is there Yes, any ma'am. child from St. Joseph? They also participated. So, all right. If none there, so it was beautiful. In fact, everybody would agree with me that we want to hear all of you, all the kids who participated, and the similar way you've written. Jury was enjoying itself to keep reading your posts. So now this is the time, and I just want to share with you as to what jury thought about you. Let me see whether I can get. Yeah. So just see, he's one of the jury members. He's in Singapore, and he had shared something. And let me see whether it's working. Uh, as a jury member, what was their feeling? We heard your feeling, but let me see whether it works. Dr. Akila, please unmute.
I think there's some issue there in the PPT. I would like to share with you as to what he spoke. Somehow something has gone wrong, so we are not able to see the full video. So what jury has gone through as to the uniqueness or the creativity of the observation of children. That is what they have checked. And they try to, and it was beautiful to read, and that the way it was expressed. So these are the things that they have given. Yeah, maybe the sound problem, as somebody was mentioning. So that is where the jury has given marks. And one more thing, that 5 members were there in the jury, Dr. Akhila Anand, and then Dr. Raj Malhotra, Madam Ashima Singh, Augustine Valiath, and Dr. Pradeep Srivastava. 5 jury members, they sat together. It was very intensive exercise, went on rounds and 3 rounds to finalize. It was actually difficult for them because everybody had written so beautifully. So there's one thing now, before I announce the results, there's one thing I wish to tell to everybody on behalf of jury members, they're all here, that everybody has been winner. Given a chance, probably we would have given first, second, third to all the 164 kids, because jury was finding just half marks difference, 1 marks difference, because every entry was unique, except a few which looked more chat GPT or AI driven, which jury members are so experienced, they immediately make out. So they were given, of course, not very good marks, but then majority of the entries were very good. So here I go with the announcement of the results. Now, when I say announcement of the result, I begin with saying everybody is winner. Everybody is winner, and not that I'm trying to console anybody. We don't need to console. In fact, I need to learn from each one of you. All jury members were mesmerized, and they learned from every entry. But nevertheless, you need to have some ranks. So based on that ranks only, the results are there. So there's nothing to lose heart, because you all are first prize winners. Come to, if you ask me, I would do that. So this time, apart from first, second, third, prize, which generally happen, we have introduced one, prize named Earth Ambassadors. So Earth Ambassador is something which, that there was so much of tie in every entry score. So we never wanted to, just do away after third prize, because the rest of the entries were also very good. Among those entries, they were chosen those all tie wala 98 out of the jury gave marks out of 98. You imagine the others were 98.5, 99, but something like becoming like your typical exams today. I don't like that. When I say 98.9, 99.1, or something like that, but it was difficult for jury. Anyways, I'm just beginning with Earth Ambassadors. So we have, I'm just announcing this. We have Sru Pratiksh, who is a student of 11B, CMS Rajajipuram 1, Campus 1, who wrote on 3 Evenings with Nature. So, Earth Ambassador category, he has won the prize. Arvind Kumar Prajapati, who is from Navsrijan School of Conscious Transformation. He is a student of class 9. Then we have K. Joshita from GMR Varalakshmi DAV Public School. She is class 10 student. Sabika, this is Earth Ambassador category I'm sharing. Sabika Saeed, she is from St. Joseph's Thakurganj. She's a student of class 10th. Fatima Siddiqui, she is also the student of St. Joseph Thakurganj School. She is a student of class 11. Y. Manya Sri, she is from Sri Gautami Smart School, Sri Ramnagar, Rajamundry, Andhra Pradesh. Lalit Manindra, he is from Raja Mahindra International School. So these are the kids who got Earth Ambassador prize. All of you are Earth Ambassadors. But since there had to be, a kind of marking, so that's how it is. And here I start with third prize, which can be the second runner-up, you can say. So there is a tie. I can see there's a tie. So there are 3 students who have gotten this
Prize Satvik Mishra from 11D CMS Gomti Nagar Extension. Aryan Gupta, Class 9, Pioneer Montessori School, Eldeco. Abhashika Singh, 11B, Spiders Web CMS Mahanagar. So these are the 3 students who have gotten third prize. The second prize has gone to Samriddhi Mishra, 11H from CMS Aliganj. Avinash, Class 12 student of Raja Mahendra International School, Andhra Pradesh. And yes, Pavani, she is from St. M.R. Jaipuria School, Gomti Nagar. She also gotten second prize. And now comes the first prize, which is Dr. Veerbhadra Mishra Trophy. The heartbeats are high, and I would like to just give you audience. I don't know whether you could see it or not. I think because of the backdrop, you're not able to see. It's a really graceful, great to see this trophy. And this is going to Sheetal Katiyar, Class 9 student, Navsrijan School of Conscious Transformation. So this is how the rank has been decided. Nevertheless, when you see these children speaking, these are the children might not have, have their name here, which I have announced, but they have written very powerfully. So as I say that given a chance, jury would have made everybody Dr. Veerbhadra Trophy, deserving candidate. But there has to be a kind of, they needed to give. So they started giving marks on that. So that's how it is. You all are winners. All of you will get a beautiful certificate designed by Mindshare for you. It will be reaching in the form of hard copy. Each school is going to get this beautiful memento, which you'll like to keep forever in your life, in your school. That is Fossil, which is coming your way. And this is, I know you've been having a tremendous patience to sit through so long. And you've been with me and with this event. I am so grateful. While I am, in a process to conclude this event, I would like to express my gratitude. This is not a kind of customary or formality that I'm doing. On Sunday, when you spend more than 3 hours listening to students, listening to speaker, it means you are those unconditionally giving people. It means you are those who believe in nature's intrinsic value. You believe in caring. You believe in really respecting. My gratitude, I can never thank you enough, but I would like to express my gratitude all the panel members and the speakers who've been with me with this event. The way you spoke and the content that you shared with everybody is something which we have a treasure forever. It will give fruits in terms of people getting inspired and doing more such kind of activities under your mentorship. I'm grateful to all the teachers who've been sitting through all time along with their kids. And more especially, all the kids you had sat for a long time listening to everything. And then you were energetic at the end also when you spoke, you looked energetic. Your entire energy was sustained. Thank you so much. I thank all my friends who've been connected in this event and including Soumya, including Sharmila, Rajiv Agrawal, who's been a very, very important contributor or friend and associate of Swayam Siddha. Rajiv, thank you so much. I mean, you were a part of it, but nevertheless, this is the time when I really want to express that. Mani, you are a part of family, and I know how busy you are. And I see you coming and staying back with this event. Thank you so much. Dr. Joshi, thank you, Dr. Joshi, who has been a part. He knows my father. He knew it, and he's been there. Umesh ji, O.P. Verma ji, you have contributed this event by, when you were in Environment Directorate, you have contributed this event by way of supporting and many other ways. And more especially, I would like to thank Gaurav, who has been helping me in, technology. Javed, who has been my colleague of NABARD, who helped me in getting Avani Mohanji. Then, of course, Zulfi Sayed, who has gotten you this mementos.
all of you, and whom I mean, I'm not going to take everybody's name, but all of you have been associated. Soumya, you from Tree Take, you have always been absolutely wonderful person. You know, the way you have contributed to environment, your investment of time is a great thing for this event. Thank you so much. While thanking everybody, all the children, I would like to say Dr. Pradeep Shrivastava. Dr. Pradeep, would you be interested in the last thing? Anil Shukla ji, he's there, but he's not showing up. Maybe he's probably, maybe the video is not working, but he's always there and he has been since day one with us. So Dr. Pradeep, would you be interested in showing up a card to Santone, with which we'll conclude? That would be the final one. Interested? Would like to? Dr. Pradeep, can you unmute yourself and tell so that I give mic to you? Just unmute yourself. I'm making you the host. One sec, I'll just see. I'm making, and we will begin happily with that, and we'll end happily with him. One sec, I'm making you host. I've done already with his sign too. So you smile, and then we'll conclude. Yes, Dr. Sir, I've already done this. Unmute yourself, please, Dr. Some problem is there. I cannot. So thank you so much. All right. So with this, we conclude. All of us will be geared to see the new version of our event, the 19th event, 2027. Yes. Anybody wishes to say anything at this? हाँ sir, बताइए. जी sir. Hello. जी sir, जी सुनाई दे रहा. जी sir. हाँ, can you listen me? Yes sir. Yes sir. I am really grateful to you for organizing such an very good event, and you are creating an army of environment ambassador every year. So I really congratulate you and your team for organizing such an wonderful event. Thanks. Thank you so much, sir. You have been the one who inspired us when you were in Environment Directorate as Joint Director and really contributed so uniquely. And you stay back every time when our event is. Thank you so much. Mani, you wish to speak something? I thought you raised your hand. Yeah. Yeah, sure. Good afternoon to all the distinguished the participants in today's meeting. Hope I am audible. Yes, you are. You are. Yeah, thank you so much. I'll take a minute or two, Shikha, just to share my thoughts. I know we are on extended time, but what I felt was today, no, we are not merely assembled for an event. I think I felt it as a conversation with our collective conscience, right? Because the theme, listen to nature and learn your lesson, is not just a slogan, I believe. It's a gentle cry, a cry from our rivers, a cry from our forests, a cry from the mountains, the birds, the animals, right? And all of these have silently borne years of human neglect. And we often speak of saving nature, but I think it is humanity which needs to be saved, because nature has already seen so many things. Very well said. Survived ice ages, floods, extinctions, so many things. And the real thing, question is whether we can learn with the humility, with the wisdom, and the restraint that nature demands. I think that is a big takeaway for me, because I feel a tree never eats its own fruit, river never drinks its own water, nor does the sun shine for itself. So one big lesson is that nature lives by the principle of giving, unlike humanity, which tries to thrive by only taking. So I think that is the biggest lesson I take back today. And it was profoundly reassuring that I could get the opportunity to listen to luminaries today, Dr. Pradeep Srivastava, Dr. Ritesh Arya ji, Professor Mahesh Thakkar, Sri Augustine Vellier, Ashima Singh Madam, Dr. Vikram Singh, whom I had the privilege of listening once or twice in person in our staff college. And the power with which he speaks is legendary. And today again, we could all feel that.
Madam K.A. Vaswani and Sri Avni Mohan Singh, who have all been living testimony to the transformative power of human commitment. I would also like to take a minute to salute all the children who participated in this international unique environment contest. Your presence, dear children, gives us hope, because while our generation debates sustainability, I believe your generation will leave its consequences. The future of this planet is not determined in conference rooms alone, but will be determined in the hearts and choices of the young people like today's participants. So I would only like to, I think all of you will agree when I say that we all leave this gathering not merely informed, but transformed. I personally got that feeling, not merely aware, but committed. And finally, not being merely inspired, but moved to action. I am also thinking of what little I can also do in this line, so that we can give back to society in how much of a small way we can. I would like to thank Dr. Shiga once again for making me a participant in today's event. And I sincerely pray that today's gathering helps us rediscover the lost ability to listen. Thank you once again so much, with the highest of regards. Thank you. Thanks, Mani. As usual, you speak brilliantly, as I've always known, but it is not just articulation. It is your feeling that you have given to everybody. Mani Kumar is Deputy Managing Director of IFCI. It's a very prestigious institute, and he is there, but he is able to spare time and connected to us. My friends have been connected throughout, Sadhna, Sujata, Aslam, all these people, R.R. Sinha, KL Vinay, all of you, thank you so much. And with this, I would like to conclude, and excited to see you 23rd August 2027. So stay till then energized with a new version. Thank you, Sharmila. Thanks, everyone. So we're concluding with this.